Good afternoon to all of you. Yesterday we had started with the topic of Delhi Sultanate. Okay. We had discussed that there are two dynasties which ruled over this Delhi Sultanate. The first one was slave dynasty. After the slave dynasty, the next dynasty which came to power was Khalji or Khalji dynasty. Okay. After this we see the rise of Tughlaq. Then we have Sayyid. The last one was Lodi. So we had covered in here the beginning of. Anyway, so we discussed about the story how Kaikubad was the last citizen of Balban, right? He was eventually killed by Jalaluddin Khalji. Jalaluddin, he was the military commander, killed Kaikubad, then he came to power, ruled for around 6 years, 1290 to 1296. In medieval history, beginning of the Khalji is often known as Khalji Revolution. Okay, it's known as Khalji Revolution. Khalji Revolution means there are large number of changes which will come in this Delhi Sultanate as a result of the coming of Khaljis. Like few of them, number one, we will see changes in administration. Previously, the Turks used to be the only nobility, but now this eventually changed. Okay. Second, we will see expansion. Expansion is going to increase during this time. In fact, large number of areas will be captured. Indirect control will be there over the south. Here, raid will be done by Malik Kafur this time. Religious policy is also going to be the more secular, and one of the most important outcome of this Khalji era is market reform. Okay. And when we combine all of these things, it is known as Khalji revolution. The word revolution means large scale sudden changes. Revolution means large scale sudden changes. Both things are very important. Large scale and sudden changes. Thus, these changes should be fundamental in nature. These changes should be fundamental in nature. Fundamental means they are irreversible. Once these changes happen, they cannot be changed. Okay, so these are known as fundamental changes. All right. ये वर्ड याद रखना, बाद में जब फाउंडेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे यू विल नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खलजी रेवोल्यूशन. ठीक है, तो बाद में इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए एटलीस्ट हैव दिस आइडिया दैट द कमिंग ऑफ द खलजीज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. Once Alauddin Khalji came to power, he wanted to now capture maximum area as much as possible. Okay, so his campaigns include capture of Ranthambore, Chittor. Before that, he even went towards Gujarat. Gujarat was a very important area because all of you know for trade and commerce, the western shore of India is dominated by Gujarat. So Alauddin Khilji was very prominent about that. Okay, he went towards Kara also. Then he went towards Devagiri. He went towards Warangal, Dwar Samudra, which was the capital of Hoysalas, and finally they went towards region of Tanjore as well as Madurai. So this is how he was able to increase the extent of his empire in north. In north it was direct control. Okay, north it was direct control, while in the south
His only objective was to have an indirect control. In south, it was indirect control. Okay, so north it is direct control, south it is indirect control. Please remember that. Okay, and little bit of name of these medieval towns. Like if somebody asks you where is Mandu, Mandu is here. Okay, it is in Madhya Pradesh. Similarly, Kara, okay, Warangal, Devagiri, Dwar Samudra. This was asked in prelims once. Exact term, Dwar Samudra, and this is in Karnataka. The name of Dwar Samudra is also Hail Bidu. It is known as Hail Bidu. This was the capital of Hoysalas. So many dynasties they were weakened by the campaigns of Alauddin Khalji, the Kakatiyas, Hoysalas, as well as the Pandyas. All these areas were now more or less controlled from a distance far from Delhi itself. And this is what is Alauddin Khilji is famous for. Okay. So please remember, Alauddin Khilji is very prominent. Then, when Alauddin Khilji came to power, he also realized there are lots of challenges in administration. He came out with something which is known as his administrative reforms. 4 major reforms किए थे इन्होंने आके. First, what he did, he ensured that there should be no marriage alliance. Nobles क्या करते थे अपने बीच में शादी कर लेते थे, right? And then उसके बाद क्या शुरू करते थे, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू कर देते थे. ये सर सबसे पहले शादी ब्याह बंद करो तुम लोग. ना आगे से निकाह भी मुझसे पूछ के होगा किस किस के बीच में कौन होगा. तुम अलायंस बनाओगे और बाद में फिर मुझसे लड़ाई करोगे. तो ही रियलाइज कि तुम्हारी शादी में लास्ट में दिक्कत मुझे होती है. दैट्स व्हाई ही डिड नोबडी इज गोइंग टू मेक मैरिज अलायंस. सेकंड, ही इंश्योर्ड कि रिबेलियन कौन करता है, who goes for the rebellion, people who are rich. तो इन शॉर्ट जिनके पास भी पैसा है उनके ऊपर टैक्स लगाओ. ठीक है, क्या लगाओ, टैक्स लगाओ. तो जब पैसा ही नहीं लड़ाई कैसे करेंगे. ठीक है, वेरी बेसिक. So he went for imposing taxes plus जिन भी लोगों को ग्रांट्स दिए हुए थे वो उनसे वापस ले लिए. जैसे कि ग्रांट दिए हुए थे मिल्क, इदरार, इनाम और सच काइंड ऑफ थिंग, सब ऐसे वापस सब कैंसिल कर दिए. कल से खत्म, किसी को कुछ नहीं मिलता मेरी तरफ से. थर्ड, he prohibited drinking of alcohol. ठीक है, उन्होंने कहा कि आज से कोई अल्कोहल नहीं पिएगा. खुद दारू पिया करते थे, है ना, आज से कोई नहीं पिएगा. फिर उन्होंने धीरे धीरे चलो ठीक है पब्लिक में मत पियो, कम से कम प्राइवेट में जो करना करो, बट एटलीस्ट इन द पब्लिक यू शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल. बिकॉज यू रियलाइज पीपल ड्रिंक एंड देन फिर तमाशा शुरू हो जाता था. कोई डिसिप्लिन नहीं है सोसाइटी के अंदर. एंड लास्ट ही इवेंचुअली came out with reforms in the education. There are multiple reforms like it includes having a very strong intelligence network. मरीज थे उनको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया. बहुत सारे और भी काफी छोटे छोटे उन्होंने रिफॉर्म्स यहाँ पे करना शुरू किए. इनको हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बोलते हैं. सिमिलरली ही ऑल्सो केम आउट विद मार्केट रिफॉर्म. आज का पीडीएस सिस्टम देखा तुमने. व्हाट हैपेंस इन दिस पीडीएस सिस्टम ऑफ इंडिया. वी हैव दिस फेयर प्राइस शॉप्स. वहां पे आप जाके अपना आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो. एंड वंस यू गेट ऑथेंटिकेटेड देन यू कैन गेट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस, व्हीट एंड अदर प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही. एंड दैट टू एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड प्राइस. वहां पे आपको मार्केट प्राइस पे नहीं करना पड़ता. यू हैव टू ओनली पे अ सब्सिडाइज्ड प्राइस. वो 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी हो सकता है, वट एवर इट इज पर केजी. So what he did, he realized that he needs a big army because Mongol threat was there for this Delhi Sultanate. बड़ी आर्मी बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा. He required resources. To get the resources, he ensured raids in South India, and whatever he got from there, to this he filled his central treasury. एक बार पैसा आ गया. Once he got money, the next thing he did was market reforms, because he knew that the most important thing was to have this markets. So there were two types of zones. I suppose if this is his whole empire,
The area in and around Delhi, this was the control zone. Control zone means where the market reforms were introduced. And then there were areas which were known as free zone. In this control zone, what he did, he eventually created three types of markets. ठीक है, अलग जो थ्री टीम मार्केट्स बनाए, एक मार्केट बनाई इन्होंने स्पेसिफिकली, ठीक है, तो भाई यहाँ से आप स्लेव्स खरीद सकते हो, ठीक है. वन मार्केट स्पेसिफिकली फॉर द क्लोथ्स एंड अदर मार्केट फॉर द अदर कमोडिटीज. Different types of markets were created by him. The clothes plus other essentials can be there. एक में slave मिलेंगे, एक में बाकी सारी commodities मिलेंगी. Like this, he created different types of markets. And logic यही था that this area is going to have my maximum army. Then what he did, came out for reform for them also. First of all, they will follow the concept of दाग and कुलिया. कि आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है, नंबर वन. जो देखो सीधी बात है, जब आप आर्मी में इंडक्शन होने जाते तो अच्छा घोड़ा लेके गए, अगले दिन जिस दिन लड़ाई करनी है उस दिन, है ना, ऐसा घोड़ा लेके गए तो पहले ही जान दे दे, तो तलवार ऊपर रखी और घोड़ा गिर गया. Those things should not happen. So we needed such kind of reforms in the army. A person should not also change. है ना, एक दिन सबसे अच्छे फाइटर गया और अगले दिन उसका छोटा भाई चला गया लड़ाई लड़ने. तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो हॉर्स है उसके ऊपर क्या रखेंगे, दाग होगा. आपका एक फेशियल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है. दाग होलिया बोलो, दाग क्या बोलो, बात क्या है, सेम ही है ब्रॉडली, ठीक है. तो आर्मी के अंदर रिफॉर्म्स किए, आर्मी को कैश में पेमेंट करना स्टार्ट, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी ब्रांच में है, दे वर गिवन a specific kind of salary on a very monthly basis. Right? So this salary eventually helped in the creation of a professional army. This professional army was sustained at very low price. Why? तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिए थे, मार्केट रिफॉर्म किया, ताकि मैक्सिमम टाइम आर्मी यहीं पे रहने वाली थी, ठीक है. Because of all these factors, he had a large army. This large army was then utilized for both purposes, to fight against the Mongols as well as whenever required to expand his both things were achieved by this large army, and this ensured that his large reign from 1296 till 1316, it came out to be one of the most successful reigns for the whole of Delhi Sultanate. For the first time, we see expansion beyond Vindhya. South India तक पहुंचे for the first time. इन्होंने टाइटल भी लिया था सेकंड सिकंदर, सिकंदर ए सानी, सेकंड सिकंदर. सिकंदर मीन्स अलेक्जेंडर का नाम क्या बन गया था, सिकंदर बन गया, ठीक है. तो उन्होंने अपना नाम भी रख लिया था अपने पॉइंट में, सिकंदर ए सानी, राइट, द सेकंड अलेक्जेंडर. So he was someone who was trying to show that he could be one of the best leaders. One more important thing about him, he was a very secular leader. He's a very secular leader. Reason being, he never used to listen to the religious class. The religious class among the Muslims used to be उलेमास. उनको उलेमास बोलते हैं, जैसे कि हिंदू सोसाइटी में ब्राह्मण्स होते हैं, वहां पे कौन होते हैं, उलेमास होते हैं. तो उलेमास जो थे उनकी सुनते हैं. एंड ही यूज्ड टू बिलीव इन दिस प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ, जिसकी लाठी उसकी बैल, जो है अपने हिसाब से करेंगे, किसी की सुनने वाले हैं. That's why he was a very secular leader in comparison to the previous leaders. And the Khalji people were common people. That's why slowly even the ruling class, it got Indianized. यहाँ से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा इंडियन, इवन इंडियन मुस्लिम, दे वर मेड पार्ट ऑफ द स्टेट. तो पहले क्या था, ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑल वर गिवन टू द टर्क्स, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स. बट नाउ इवन द इंडियन मुस्लिम्स, हिंदूज, they were given good posts. So starting from the Khaljis, we see a complete shift in the orientation. However, again, the same thing which happens in every dynasty. इनके बाद जो इनके नए सक्सेसर आए, मुबारक खलजी was not good, and eventually he was killed. And finally, we see the beginning of the Tughlaq dynasty.
Tughlaq dynasty, it was now established by Ghiyasuddin Tughlaq. Came to power in 1321, ruled till 1325. He was coming from a military victory. और इनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनको दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़ा स्वागत करना। स्वागत इतना बड़ा किया कि जब उनके फादर पहुंचे वो स्टेज ही गिर गया। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई मैनी थिंक दैट मोहम्मद बिन तुगलक killed his father deliberately. This is how his reign started. His father died by the falling of that stage, and this is how मोहम्मद ऐसे शुरू हुई थी रेन। तो मतलब शुरुआत में पता चल गया कि what is going to happen in the future. Now Muhammad bin Tughlaq, he is known for multiple. Okay, the best thing is about him is that he was an innovator. In fact, he was a very well-read person, having knowledge of multiple subjects, and he was having this zeal of innovation. जैसे बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होता है, ठीक है ना, होता है वो कि भाई नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे जिंदगी का, फिर गलतियां शुरू होती है एक एक करके। सारी बुक खरीद के रख ली, थोड़ी थोड़ी पढ़ी, फिर आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो हो नहीं पाएगा, है ना, फिर समथिंग एल्स। तो लाइक दिस इन्होंने अपने कुछ ऐसे इनोवेशंस करने की शुरुआत करी। इन्होंने काफी सारी चीजें करी, जैसे 5-6 चीजें हैं टोटल मिला के। सबसे पहले इन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की अपनी पूरी कैपिटल। अब इसके ऊपर बहुत बहस होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट व्हाट वर द रीजंस रिस्पांसिबल फॉर द शिफ्ट ऑफ कैपिटल। द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। नाउ सम historians say that it was a very strategic move. Reason being, Daulatabad being in Maharashtra is broadly the central part. It is easy to even have a look at west part, east part, and you're a lot away from the Mongols. But depending upon the person, there are different kinds of interpretations. Like some of these travelers, they say दिल्ली के लोग गाली दिया करते थे इनको लिख लिख के ना, पेपर का यूटिलाइजेशन शुरू हो चुका था और लोग चिट्ठी लिख लिख के गालियां लिखा करते थे। तो ही वांटेड टू पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली कि तुम्हारी औकात कैसे हुई तो मुझे गाली देने की। But the problem was, it was a logical thing. Like today, it's very difficult to shift capital there from Delhi to anywhere. But at that point of time, he thought, चलो ठीक है कर लेते हैं। The मनमानी चलती थी. They never used to care about anything else. But this capital was changed in the middle of summer. ठीक है? समर में आप सब लोग जानते हो क्या हालत होती है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। And that's why lots of hassles were there. And finally, by the time he was ready to get settled in this area faced a plague. Large part of his army died in this. That's why finally he went back to Delhi. ये इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, द शिफ्ट ऑफ कैपिटल, जिसका जो भी लॉजिक था बेसिक से ही अच्छा मूव हो सकता था, because this would have been a more safe capital in comparison to Delhi, but it never fructified. पूरी कोशिश की, पैसा बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया, लोगों को अपने अगेंस्ट कर दिया। ठीक है ना, तो कहानी है इसके अंदर, मतलब एंड इट्स अ वेरी सिली काइंड ऑफ स्टोरी कि भाई एक शेर ने मना कर दिया दौलताबाद जाने, ठीक है, तो उसको पीछे बांध के घसीटते हुए लेके गए। एंड बाय द टाइम वी रीच देयर, ओनली वन leg of the lion was there, rest of the lion it was left behind. ठीक है, तो अलग अलग कहानियां हैं इसकी। Like it keeps on happening. जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन एब्रप्ट डिसीजन लिया जाता है इन इंडिया, जैसे तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हैफहजार डिसीजन लिया जाता है। सेकंड इज टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी, इट वाज इनोवेटिव, but let us try to understand why it also failed. So there was scarcity of silver in the world during the 14th century. There was scarcity of silver. They could not have the funds of silver. Let me give the value of silver to what? To a copper coin. ठीक है, अब देखिए इस बेसिस पे करेंसी सिस्टम्स चलते हैं। समझिए इकोनॉमिक्स में दो तरीके के सिस्टम होते हैं,
एक सिस्टम होता है इंट्रिंसिक, द सेकंड सिस्टम इज नोन एज एक्सट्रिंसिक. Like if you have an Indian currency note of suppose 500 rupees, what's the value of that? Okay, what's the value of that? If government says I'm not giving you legal tender, तो कोई 500 रुपए का सामान देगा आपको उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं देगा. Why? Because उसकी वो वैल्यू है नहीं. ओके, वो वैल्यू आती कहाँ से है? इट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट और द आरबीआई से इट्स अ लीगल टेंडर. दैट्स वाई कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है. बट सपोज इफ यू हैव a 500 rupee coin of gold that is having this intrinsic value, it doesn't matter गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है. So whenever we have intrinsic value, ज्यादा दिक्कत आती नहीं है. बट व्हेन यू हैव एक्सट्रिंसिक वैल्यू, सबसे पहली चीज क्या शुरू होती है? फॉर्जरी. जैसे फेक इंडियन करेंसी नोट कई जगह से आते हैं, है ना? आते हैं ना, कहाँ कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल की साइड से काफी सारे आते हैं. तो यही दिक्कत यहाँ पे हुई. इन्होंने कॉपर को वैल्यू किसकी दे दी? सिल्वर की. तो नेचुरली लोगों ने किसको मिंट करना शुरू कर दिया? कॉपर कॉइन्स को. इस तरीके से उन्होंने डाई नहीं बनाया कि नोबडी शुड बी एबल टू कॉपी इट. इट वाज सो इजी टू कॉपी. तो एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग दिस. सुबह से लेकर शाम तक काम क्यों करोगे? लेके आओ कॉपर, बनाओ कॉइन घर के अंदर. सडनली दिस बिकेम बिग चैलेंज फॉर दिस तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फाइनली ये पूरा एक्सपेरिमेंट भी क्या हो गया? फेल हो गया. व्हाई? बिकॉज इफ यू हैव दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्चुअली करेंसी चलती है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट इन द करेंसी. आप उसको क्यों लोगे? आप डॉलर कन्वर्ट करके पाकिस्तान की करेंसी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, बिकॉज आपको पता है कि कल क्या होगा पता नहीं. अगर IMF ने बेल आउट नहीं किया तो अगली बार कितना करेंसी डेप्रिसिएशन होगा पता नहीं. यू विल नेवर थिंक अबाउट बाइंग एनी करेंसी विच इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो चेंज हो गया था यहाँ पे. दैट ऑल्सो फेल्ड. ऐसे इन्होंने दो चार और काम करने की कोशिश की. नाउ देयर वाज अ प्लेस in Central Asia by the name of Khurasan. There was political instability in this region. तो वहां से काफी सारे नोबल्स आए. उन्होंने इसको सुना कि जहापना तो ग्रेट हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू खुरासान, यू कैन कैप्चर दैट एरिया. वो भी सुनी सुनाई बातों में आ गई. हाँ, बहुत अच्छी बात बोलती है. ठीक है. ही सेड ओके, लेट मी नाउ क्रिएट एन आर्मी फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस. लैक्स ऑफ सोल्जर्स दे वर हायर्ड. एक साल के लिए प्री पेमेंट दे दिए. ठीक है. ये कभी हुई ही नहीं. ऐसे ही उसको डिसबैंड कर दिया लास्ट. जाओ, हो गया काम खत्म. इन्हीं में से जो कुछ सोल्जर्स थे, जब ये हुई नहीं तो उनको भेज दिया एक छोटे से जगह में जिसको हम बोलते हैं कराशिन एक्सपीडिशन. छोटा सा किंगडम था बेचारा हिमाचल में. वहां भेज दी अपनी आर्मी. thousands of soldiers were sent. Many of them they died during the process because of landslide, because of the kind of fight they had to with the tribal people around in that area. Hardly few people came back to his fort. उनको ही मरवा दिया. कि अगर तुम जिंदा रह जाओगे तुम सबको चिल्ला चिल्ला के बताओगे क्या होगा, तो अपनी वीकनेस भी तो छिपानी होती है. दैट वाज डन इन दिस कराचिल एक्सपीडिशन. फिर एक एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट आता है इनका, in which he thinks that I am going to create a new kind of system for people. एक इन्होंने एरिया ढूंढा 100 किलोमीटर by 100 किलोमीटर. And in this he thought I am going to go for superior kind of crops. ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे कि लोग देखेंगे कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है. अब सोचो अगर ऐसा एरिया इन्होंने चूज कर लिया, जैसलमेर, बंजर जमीन ले ली. ठीक है. वहां 2-3 साल तक पैसे फूकते रहे और लास्ट में ये प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया. ना जितने भी इनके प्रोजेक्ट फेल हुए उनमें एक चीज बहुत क्लियर है, दैट द ब्यूरोक्रेसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज फेलियर. तो सारी की सारी चीजें कैसे फेल हो सकती है? वी हैव किंग्स लाइक जहांगीर ऑल्सो, जो भी इनसे भी ज्यादा बेवकूफ. ठीक है. बट इवन दैट पर्सन सक्सीडेड. बट he is often considered as a
ट्रांसेंडेंट फेलियर। ट्रांसेंडेंट का मतलब, फेलियर का मतलब होता है कि जिस भी चीज को हाथ लगाकर मिट्टी बन जाती है। ट्रांसेंडेंट, कंप्लीट फेलियर इन ऑल डोमेन्स। So that's the personality perception which we have of Muhammad bin Tughlaq. Now, mind it, he ruled over the largest empire under the Delhi Sultanate. He was a strong military leader. It was not like that he was not having qualities. The problem was, जो भी सोचते थे वो इनोवेटिव तो होता लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, फर्स्ट अटेम्प्ट का जो बच्चा होता है वो सोचता बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कि हम 10 बुक लेके आएंगे, हम सारे पीवाईक्यू सामने रखेंगे, फिर हम नोट्स बना देंगे, फिर हम आंसर राइटिंग कर देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 दिन बाद बुक वहीं रखी हुई है, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नोट्स बन नहीं रहे हैं। तो दैट्स नथिंग बट दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इनोवेशन तो होती है, दिमाग में बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दैट आइडिया कि हाँ भाई किस तरीके से पढ़ना होता है, किस तरीके से नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनना। मोहम्मद बिन तुगलक died when his cousin Firuz Shah Tughlaq came to power. Or FST in short, came to power in 1351. He was a person of religious orientation. Hardly had few military campaigns. Okay, he was a person of religious orientation. We see an orthodox religious policy during, but at the same time, he was also known for public construction. His public construction activities are very good. Like he was responsible for constructing large number of canals, hospitals, watch clocks, and number of things. So large number of such things were done by him, and that's why he is often considered a person who pursued the policy of welfare state. In fact, he had to reverse many of the policies of Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जितना नुकसान हुआ था लोगों को, वो सब कुछ इनको भरपाई भी करना पड़ा। Right? So many things were done by Firuz Shah Tughlaq just to stabilize the empire. But the problem with him was, he was a person who was pursuing the policy of what is known as appeasement. Appeasement means that you are giving someone something which they don't deserve, or accepting illegitimate demands of someone. Like in 3-4 ऐसे काम किए जिससे पूरी स्टेट destabilize. There used to be a system, we discussed the name, ICTA system. ICTA system was made hereditary by him. Previously, it used to be on the basis of merit. अभी तो कहा नहीं, अब hereditary रहेगा. After the death of the इक्तदार, then his son, then his son-in-law, or etc. can become the इक्तदार. तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी खराब हो गई इसके बाद. ठीक है, ICTA system made it problematic. Second, he gave up the system of survey and measurement with respect to collection of revenue. That also made the revenue overall unstable. कभी ज्यादा कभी कम, तो वो दिक्कतें भी शुरू हो गई यहाँ के बाद. ठीक है, he was not a very strong military commander, so army became weak. And one more strategic error he did, he kept on making or kept on introducing slaves into the army who were not trained well. So because of all these areas, army became weak, bureaucracy became weak, agriculture became weak. Multiple things happened during the time of Firuz Shah Tughlaq. So as a result of this, by the time he died, the whole Tughlaq empire was very close to failure. And then came the last strike, and that came from Timur. Timur attacked India. Okay, Tughlaq dynasty was in power. King who was there at that point of time fled, छोड़ के भाग गए. The king ran away. कि मुझसे हो ही गया. ठीक है? The king ran away. And after this, this dynasty became very weak. Even though it continued till 1414, in 1414 the power was captured by Khizr Khan. Khizr Khan established the Sayyid dynasty. Sayyid dynasty does not have anything major, any major achievement. In fact,
they themselves used to represent, because Timur was the one who has given the nominal sovereignty to the Sayyid dynasty, the founder Khizr Khan. Finally, they gave up power, and by 1451, we see the beginning of Lodi dynasty. Okay, we see the beginning of Lodi dynasty by 1451. In fact, the last rulers of Sayyid dynasty, his name was Alauddin. वो छोड़ के ही चले गए कि मुझे नहीं करना है ना, मुझे संत बनना है, want to become a Sufi, तो छोड़ के चले गए पावर. And this is how the Lodi dynasty was started. तो एक अकेली डायनेस्टी है जिसमें मारकाट के वो पावर में नहीं है, बिकॉज वो खुद ही पावर छोड़ के चले गए. ठीक है. So Lodi dynasty came to power. Lodi dynasty has 3 rulers. The founder was Bahlul Khan, then his son Sikandar Khan Lodi. Okay. The last one is Ibrahim Khan Lodi. Okay. These are the 3 rulers. Bahlul Khan. Now, one important thing about Lodis is that they were Afghans. And the problem with Afghans is that they do not have any kind of absolute concept of sovereignty. वो किंग के में ज़्यादा बिलीव नहीं करते. They think that everyone is equal. So they believe in the theory of first among the equals. That's why the nobles, they never used to listen to the king. वो सुनते ही नहीं थे उनकी. In fact, Bahlul Khan Lodi used to never sat on the throne. वो भी नोबल के साथ नीचे बैठे चादर बिछाते, तो किंग की फील लेने नहीं देते थे. It was first among the equals, and this created a challenge. Why? Because if the king is not strong, then the conspiracies are going to be there till the end of time. In fact, all of you should know Ibrahim Lodi, when he fought the war with Babur, one of his uncle Daulat Khan Lodi, he was the person who invited Babur, right? So that shows that the nobility of these Lodis was not disciplined, and this became one of the major reasons for the downfall of Lodi dynasty. Lodi dynasty is famous in India for a few things, like they're famous for architecture. The concept of double dome started during their time. Monuments were built in the middle of garden. The concept of देखा है Lodi garden? So the concept of garden plus monument was merged by them. So many such new things were brought in by them. But in comparison to the Tughlaq dynasty, which was ruling around the whole part of India, they were ruling over a very less part. The very small part was under the control of Lodi dynasty, right? And finally, they were taken over by Akbar. ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. Okay, the Tughlaq dynasty starts with Ghayazuddin Tughlaq. Next one is Muhammad bin Tughlaq. Okay, and Tughlaq, see, broadly he was able to have control all the way till here. Tughlaq dynasty was having majority of the India under their control, and that was a significant achievement. But the problem was only one: it was not very well knit. It was not very well controlled. Like during their time, the revolt was responsible for the rise of Bahmani. During the reign of Muhammad bin Tughlaq, which dynasty rise? Bahmani as well as Vijayanagar. Both of them, they rise during the time of Muhammad bin Tughlaq. Okay? This in 1336, led by Harihara and Bukka, and Bahmani in 1347, led by Alauddin Bahman Shah. That's why these two areas are going to go out of this Tughlaq dynasty during the time of Muhammad bin Tughlaq itself. Firuz Shah Tughlaq is largely ruled over this area. Okay, Firuz Shah Tughlaq, he largely ruled over this area. He never tried to fight with Bahmani as well as Vijayanagar, because since he was not a very strong military general, he thought he would pata hai apni kya aukaat hai. Okay, this was a token currency, right? The token currency was easy to be picked by anyone, and that created a very big problem. Right?
This is about Firuz Shah Tughlaq. Firuz Shah Tughlaq. The thing about Firuz Shah Tughlaq was that he was born of a Hindu mother. That's why he was always having that extra level of initiative to show that he is a real Muslim. That was the challenge, and that's why he pursued a very orthodox religious policy. Okay, lots of religious policy, and he didn't believe in wars as such. Many public construction irrigation projects were done, but then came the invasion of Timur, right? And इनके टाइम पे जो सुल्तान थे यहाँ पे उनका नाम था सुल्तान नसीरुद्दीन. नसीरुद्दीन अपने आप को सुल्तान बोलते थे और सुल्तान बोलते बोलते ही भाग गए, है ना, बिकॉज वी सी द एंट्री ऑफ तिमुर. उन्हें पता चला कि भाई जान देने से अच्छा है ना भाग लेते हैं इस टाइम पे, बाद में फिर से सुल्तान बन जाएंगे. तिमुर लूटेड प्लंडर्ड, देन केम द सैयद डायनेस्टी. ठीक है, सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं क्या बोलते हैं, खिजर खान बोलते हैं. ठीक है, एंड ही वाज द वन हु वाज हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ तिमुर. ठीक है, दे कंटिन्यू एंड फाइनली लाइक आई हैव जस्ट टोल्ड यू द लास्ट रूलर, okay, he gave up and eventually this was beginning of Lodi dynasty. So Mahlul Khan Lodi, Sikandar, and finally yes, Ibrahim Lodi. With the arrival of Islam, we also see the entry of Sufism. Sufism comes from a word that is Sufi. Sufi means soft. Okay? So it means the liberal interpretation of Islam. Liberal interpretation of Islam. Sufis are also two types, Bashara and Beshara. Bashara means those who believe in Sharia, इनका बोलते हैं बाशरा, और जो बेशरा होते हैं they are the one who do not believe in Sharia as. इसलिए जो बेशरा है के अंदर आते हैं, जैसे कलंदर वर्ड सुना है, मस्त कलंदर. These people they do not believe in any kind of rules like कलंदर, they are part of बेशरा. तो बाशरा ट्रेडिशन है, इसके अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं. ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स हैं इसके अंदर. तो जो सबसे फेमस स्कूल है इंडिया के अंदर दैट वाज चिश्ती. तो स्कूल, सिलसिला, ऑर्डर, हर तरीके का कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. द वर्ड सिलसिला इज ऑल्सो यूज विद द Sufis. Like Chishti was a very famous school. Okay. So was Sohrawardi. Okay. Sohrawardi was also there. Kadaria was also a famous school. Anyway, you don't have to learn the name of each and every school. Two are most important, Chishti and Sohrawardi. These two were very, very important. All भी थे, ठीक है, but निजामुद्दौला he also belong to Chishti. Chishti को ही follow करते थे. ठीक है, तो दो सबसे फेमस स्कूल थे, Chishti and Sohrawardi. These two. Chishti were the kind of people who used to be focusing only on spirituality. They never took any kind of status from the state. ना वो स्टेट से कहते थे कि हमें कोई हायर पोजीशन पे अपॉइंट करो. तो Chishti were like common people. And since they were following only the commoners, or they were just living among them, they were the most famous. They used to believe in what is known as Sama. Sama means use of music to connect with the God. बोलते हैं Sama बांध देना. Use of music to connect with the God. So that was the philosophy of Chishti. Sohrawardi की अलग philosophy थी. Sohrawardi they used to be closely associated with the state, and they were the one who used to say क्यों हम poor क्यों मरे जिंदगी के अंदर, when we can have richness, okay, when we can become rich, should do that, should have everything. That's why Sohrawardi were having different kinds of ideas, Chishti were having kind of ideas. These two are the most famous schools. The rest, around 12 to 14 schools are there. All of them are not important to us. Okay, so these were the Sufis. Economy we will discuss later on in detail. The few slides will not be able to do justice. Yes.
State patronage was not there. If state patronage is not there, it's not easy to spread. If the king is not supporting the religion, then it cannot spread. Hmm? Reason? It depends upon the ruler. What's the reason for that? Like suppose Ashok, he was initially a believer in Shaivism. Then he got convinced with Buddhism. He connected with Buddhism, and then his policy spread Buddhism far and wide. So it depends upon the ruler and his own individual disposition कि कौन से religion की तरफ वो जाना चाहता है. So initially, if you see the ideas of Islam also they came like Kerala is one of the first place where the mosque was created. Okay, सबसे पहली जगह जहाँ पे mosque create किया गया. But what we understand from that, at that point of time, they were just the merchants who were the followers of that. There was no specific higher level of convergence or higher level of spread of the ideas of this religion. So that's why since those things were not, they did not spread. Even the Arabs who came in 8th century, they were not able to come at that level. They could not come towards the east. They were defeated before that. By the time Turks came for the establishment of Delhi Sultanate, from this time onward, we see the beginning of the convergence on large scale. Even many of the Sufi centers, there we see convergence. Large number of convergence were done. Depending upon how many people were accepting this theology, accepting this religion. So it's a personal thing also, it's a political thing also. Multiple things are there, depending upon the requirement. Okay, and sometimes if it attracts the lower classes of any other religion, then the changes are also going to come very easy. Like if we see the case of Sikhism, in Sikhism we see that trading class like Khatri, they were the supporters of Guru Nanak Ji. Similarly, we later on see that many of the scheduled castes they converted to Sikhism. So like that, it means that you have to cater to a segment, and your philosophy should be so easy that everybody could understand that. तो अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. That's how it is. That's how it has improved over a period of time. Not first adopted by Ashoka. There are lots of rulers in between. हमने मेजर वजह से स्प्रेड जो बड़े लेवल पे वो थे. Yes. The coming of the Turks, the arrival of the Turks. जैसे टर्क्स आए, जैसे कि हमने बात किया मोहम्मद गुरी आए. Initially, it was like starting from the Prophet Muhammad. He is considered as the Messiah. He is considered the person who came out with the message of God. So he is not God. He is speaking the words of God, which eventually took the shape of Quran, also known as Hadith, the sayings of Prophet. उसके बाद जो वो एरिया था, पूरा का पूरा जो अरब वाला एरिया था, वहां पे स्प्रेड करता सबसे पहले, और वहां पे फिर बनती है इनकी जो कैलिफ का इंस्टीट्यूशन बनती है. कैलिफ जो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग इट टू different parts of the world. Because they used to feel like that all those people who do not have idea about Islam, they should be given at least idea about. और अरब जो थे they were fierce warriors. Since they kept on capturing more and more territory, तो धीरे धीरे करके उन्होंने काफी एरिया को जो ये उन्होंने कैप्चर कर लिया फिर वहाँ पे कन्वर्जेंस भी हो गए अच्छे खासे. इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स. लाइक एक फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता, बहुत सारे फैक्टर साथ मिलके चलते हैं. जब वो साथ मिलके चलेंगे तभी ये पता चलेगा कि कितना उसका आउटकम निकलेगा. ठीक है. Let us now try to understand a little bit from South India's perspective also. Okay, like we have discussed about early medieval period from North India. With respect to South India, we have one famous dynasty, that is the dynasty of Cholas. Okay, Chola dynasty it became influential in 9th century. The first ruler or the founder of this dynasty is known as Vijayanagar. Okay, so he is the founder of dynasty. But the two most influential ruler of this dynasty, the first is Raja Chola, the second is Rajendra Chola, his son. These two are the most famous personalities of this. Raja Chola, he came to power around 986, and
Rajendra Chola, he continued till around 1044. So broadly, if we see around 60 years they ruled, and they were responsible for taking the Cholas to its heights. उसको हाइट्स तक लेके जाते हैं. तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग है वो 9th सेंचुरी में नहीं आती. इट कम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th century plus the first half of 11th century. This is the time period during which Cholas were the most formidable power in India. They were the most formidable power in India. In fact, Rajendra Chola, he was responsible for going all the way up to the Ganges. That's why he took the title of Gangaikonda. Okay, so and then he established a town also, Gangaikonda Cholapura later. Right, that's how the name came into the picture. Right, so the founder is Vijayana. He is the founder of this dynasty. All right, and they are known as Imperial Cholas. Right. After them, one of the famous personality is Parantaka first. Parantaka first is famous because there is one inscription. In fact, multiple inscriptions are there at a place by the name of Uttarameru. Uttarameru inscriptions are very famous. They give us understanding of how the overall village governance used to happen. कैसे committee बनाया जाती थी. Okay? So all this, like there used to be 30 people who were selected every year, and they used to form different committees, and the committees used to look after the overall. Okay? Raja 1 and Rajendra 1. These two are the most important personalities with respect to Chola Empire. This is broadly the empire under their control. Okay? This area was the most important one. Then they kept on expanding it to the other areas with the period of time. Alright. Raja Chola. Raja Chola is a very important personality. Okay, as we've discussed, he is known for his naval expedition. Like he was able to capture the northern part of Sri Lanka. North part of Sri Lanka was captured by him. He even conquered the region of Maldives. आजकल international politics में आगे खड़ा रहता है. This was also captured by Raja Chola. Right? And the military victory was very important over Sri Lanka. The north part was captured by him. Then he also appointed a Tamil chief to govern the annexed region and ordered temple to be built also. Okay? And this temple was called Raja Rajeshwar. And the place where it was built was Mahathita. Okay? So Mahathita was the place where it was built. Then came his son Rajendra Chola. Okay, so he was the one who take it even further. In fact, he destroyed the kingdom of Pandyas. Okay, he used to rule towards the region of Madurai. He conquered the whole Sri Lanka. Actually, these Pandyas, they escaped to Sri Lanka with treasure. तो उन्होंने कहा कि वो खजाना लेके जा रहे हो तो मैं भी आपके पीछे आया थी. तो इवेंचुअली जब पैसा लेके पहुंचे थे श्रीलंका ना, अपने पैसे के चक्कर में श्रीलंका को भी बर्बाद करवा. So the whole Sri Lanka was captured. और वहां पे जो पांड्या के क्राउन थे और अदर रॉयल बिलोंगिंग्स थे उनको फिर से कैप्चर कर लिया गया. Thereafter, the most important is his expedition to northern India, and after this he eventually took the title of Gangaikonda, and then he built a famous temple. Right, first famous temple is the temple of Videshwara, which belongs to the reign of Raja Chola, and then comes the Gangaikonda Cholapuram temple. Okay, this was also the capital. Initially, the capital, okay, it was towards the region of Tanjore, but later on it was shifted to Gangaikonda Cholapuram. Okay, and as we talk about naval campaign, so Rajendra Chola was going to go even one step ahead. Srivijaya kingdom, it was the region of southern Sumatra. All of you know that in Indonesia we have multiple islands: Java, Sumatra. Sumatra was the area which was brought in under the nominal control of the Cholas. Okay, and they were able to do this. The major reason was this, that they wanted to control this region. Alright, so if we see with respect to, let's see the map first. Yes, so they wanted to control this region, this whole region. In fact, some historians say that Bay of Bengal, it became a Chola lake. Okay, Bay of Bengal became a Chola lake because they were having a strong navy. There are always discussions with respect to कि किस डायनेस्टी के पास सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी थी इंडिया के अंदर. अगर किसी ने नेवी के बेसिस पर जाके किसी को कैप्चर किया तो अकेली एक कौन सी हमारी डायनेस्टी है? चोला.
Chola is the most famous dynasty. In fact, later on even Marathas tried to build up their navy, but their navy was more or less in these territorial waters. Okay, the waters which are very close to your actual frontier. However, they were having this blue water navy. Blue water navy means which can go to the higher seas and then can defeat or capture the enemy. The Cholas were probably having the most famous navy of their times. Okay, so they were having the strongest navy of their times. Religion, if we talk about religion, they gave patronage to Shiva. They were follower of Shaivism, right? So Shaivism was followed by them. All of you know the famous sculptures of Nataraj. It was built during the time of the Cholas, okay? And they also built famous temples of this time, right? The last ruler of this dynasty was Rajendra Chola III, okay? And he was killed. It eventually led to the decline. This was the end of the Chola Empire. Alright. In exam also, UPSC asked 2-3 kinds of questions from here. Like one question is often asked on this Uttarameru inscription of the local self-governance. Okay, there is a historian by the name of Neelkant Shastri. Neelkant Shastri is always having his opinion on the dynasties of South India. We always remember the perspectives of Neelkant Shastri. His ideas about local self-governance. We also ask question about the military exploits, the military tradition. Alright. So all such kinds of questions are asked by UPSC with respect to the Cholas. As we were discussing that Delhi Sultanate has 5 major dynasties. And the most powerful dynasty was the Tughlaq dynasty. Okay, and from here itself we see the beginning of the downfall also. Tughlaq dynasty. So under Muhammad bin Tughlaq, many revolts came. It led to the rise of 2 major areas. Like first was Vijayanagar itself. Vijayanagar established in 1336 by Harihara and Gupta. The second one is Bahmani by Alauddin Bahman. Okay. His name was Hasan Gangu. So he had served a Brahmin by the name of Gangu, that's why the name was attached. Later on, after coming to power, he took the title of Alauddin Bahman. That's why they say it is the Brahmani. Okay. This was in 1340. In the 14th century, we see the rise of 2 major dynasties, one in Deccan and one towards the south. Okay, these 2 are the prominent ones. If we see with respect to Bahmani, Zafar Khan was the one who declared independence at Devagiri, and then he took the title of Bahman Shah. Alright, and later on, a few years before them, we also had the Vijayanagar, and they kept on having this fight. The major fight between these 2 dynasties was over the region of Raichur Doab. This was the region as well as for the seaports, Goa, because they required forces, and if you want to control that, you need ports. So please see this. This was the area which was under the control of Bahmani. Okay. This was under the control of Bahmani, and the green area, this is under the control of Vijayanagar. Okay. Bahmani Empire continued around 1527 broadly, and Vijayanagar Empire in 1672. Okay. This is the existence of the Bahmani and the Vijayanagar Empire. So, yes. Look, there were four small dynasties which had emerged before them. Okay. Like if you see,
Yadavas, they were the one who during the Western Deccan. But the Yadavas, they were taken down by Alauddin Ahmad. Other Alauddin Khilji itself had defeated and then made it part of his empire. Later on, when Muhammad during the time of Muhammad Tughlaq, we see the rise of the Bahmanis. Hoysalas were there in Karnataka. Again, they were defeated by Alauddin. Same happened to Kakatiyas and the same happened to even Pandyas. So, जो Malik Kafur की रेड थी, that destabilized all these areas. ठीक है ना? और later on जब उनको मौका मिला, they were able to become independent. Okay? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दोनों के दोनों एरिया बना दिया. ठीक है? The founder Alauddin or the Hassan Gangu, Muhammad Shah. Alright, he had rivalry with Vijayanagar in general. When he came to power, he tried to improve his administration. So he divided his whole empire into तरफ्स. जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इसका सिस्टम था, यहाँ पे कौन सा सिस्टम था? तरफ सिस्टम था. इसको हम तरफ सिस्टम बोलते थे. ठीक है? एंड ईच गवर्नर he was having army of his province under their control. The provinces थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बिदर as well as Berar. And this system worked out well under a powerful king, but under a weak ruler, it was a very weak system. ठीक है? Because आपको उस टाइप की ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो आपके अंडर काम कर सके. इनके जो अर्ली एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे उनका नाम क्या है? मोहम्मद फर्स्ट. मोहम्मद फर्स्ट इज फेमस बिकॉज जो बाद में सिस्टम बनेगा अष्टप्रधान किसका? छत्रपति शिवाजी. उसका जो इनिशियल सिस्टम था वो मोहम्मद वन ने बनाया. तो मोहम्मद वन वाज द पर्सन हु केम आउट विद दिस सिस्टम ऑफ 8 मिनिस्टर्स. ठीक है? इन्होंने ये बहामनी के अंदर बनाया. लाइक द टॉप यूज्ड टू बी वकील सुल्ताना वाज लेफ्टिनेंट, वजीर वाज द चीफ मिनिस्टर, अमीर जुमला वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर अशरफ वाज द फॉरेन अफेयर्स, नाजीर द असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस. पेशवा duties were unclear but mostly associated with Wakilus Sultana. Kotwal was the chief of police and Sadar-e-Jahan was the chief justice. The initial this system of 8 ministers किसने create किया था? Muhammad first, and he belonged to this Bahmani dynasty. कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी. तो वहां पे आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग कि इन्होंने कहां से ये सिस्टम डिराइव कहा, स्टार्ट कहां से होगा? ये हार्मनी से स्टार्ट होता है. एंड दिस सिस्टम वाज देयर इन द डेक्कन रीजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड बाय द टाइम व्हेन ही क्रिएटेड हिज स्वराज्य इन 1674, ऑलरेडी इट हैड गॉन थ्रू अ लार्ज लेवल ऑफ द ओवरऑल रिवीजन. धीरे धीरे करके इसका एवोल्यूशन होगा और वो बाद में उसको और अच्छा बनाएंगे. ठीक है? देन 2 फेजेस रहते हैं इनके. ठीक है? हमें याद रखना चाहिए जो इनिशियल कैपिटल थी of Bahmani kingdom, it was Gulbarga, and later on the capital became Bidar. तो 2 फेज हैं पूरे के पूरे Bahmani empire के. ठीक है? तो from Gulbarga to Bidar. Then we also had one of the most finest personality in this whole of empire. That person's name was Mahmud Gawan. Mahmud Gawan is very famous. He was initially a merchant. पर्शिया की साइड से आए थे. एंड एक राइवलरी चला करती थी इस पूरे एम्पायर के अंदर जिसको हम बोलते हैं अफाकी वर्सेस दक्खनी. ठीक है? दक्खनी, they were the nobles, they were the people who were from this Deccan region itself. और जो लोग बाहर से आते थे उनको क्या बोलते थे? अफाकी. पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी, it used to have this person. Okay? The bureaucracy used to have this person, and that's why since Mahmud Gawan he was a अफाकी, तो इनके खिलाफ बहुत सारी कंस्पिरेसीज भी हुई और लास्ट में इनको क्या किया गया? He was executed. Anyway, if you see his profile, he served as a prime minister under Shah. He was very successful, expanded the empire and even defeated the kingdom of Vijayanagar. He introduced the gunpowder also. There was this specific campaign known as Belgaum campaign in which gunpowder was used in. That's very very important. एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ किया था. गन पाउडर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बाबर. तो बाबर से पहले कौन आ चुके थे ऑलरेडी? महमूद गवन, जिन्होंने उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इनिशियली 4 प्रोविंस थे. ही फर्दर डिवाइड देम इनटू 8 प्रोविंसेस. कुछ कुछ हिस्से हर प्रोविंस के उन्होंने अपने कंट्रोल में डाले, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देन ही आल्सो इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल दी. प्लस ही इज आल्सो फेमस फॉर बिल्डिंग अप द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्होंने मदरसा बनाया बिदर के अंदर, एंड दैट इज वन ऑफ द
मोस्ट फेमस। इनफैक्ट बिदर के अंदर उन्होंने लाइब्रेरीज वगैरह भी एस्टैब्लिश करवाई थी। ठीक है, बाद में डिक्लाइन होता है इनका, पूरी की पूरी जो ये डेकनी स्टेट्स हैं सारी अलग अलग हो जाएंगी इसमें धीरे धीरे करके। ठीक है, Bahmani Empire is going to split into four major ones, which includes Bijapur, Ahmednagar, Berar, and Golconda. These are going to be the important ones. While Bidar, okay, it is going to remain a small one. Alright, so these are going to remain the part. और बाद में इन्हीं सारियों को कौन को कैप्चर करेंगे? मुगल्स। ठीक है, तो महामनी एम्पायर का डिक्लाइन होगा। By that time, we see the entry of Babur, later on under Akbar, and then later under Shah Jahan, and finally under Aurangzeb. These states will be captured by 1687. विजयनगर की बात करें तो विजयनगर was established by two brothers by the name of हरिहरा and हुक्का। उन्होंने मिलकर इस पूरे एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी, these two they were captured and they were taken to Delhi. उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। Then they came back to the Deccan region, है ना, वहाँ पे इनको वापस से इन्होंने रिकन्वर्ट किया हिंदुइज्म। इनके गुरु हुआ करते थे बाय द नेम ऑफ विजयरना। एंड उसके बाद जो एस्टैब्लिश हुआ एम्पायर दैट इज नोन एज विजयनगर। और जो इनकी कैपिटल थी उसका नाम क्या था? हम्पी। इस पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है चार पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ फोर स्पेसिफिक लीनिएज। ठीक है, फर्स्ट क्या है? संगम, देन सुल्व, देन वी हैव सुल्व एंड फाइनली इज अराबिडो। चार स्पेसिफिक लीनिएज है एंड दे रूल्ड इन टोटल फॉर ओवर 300 years. They start from around 1336 and continue all the way up to around 1672. ठीक है, तो वहां तक इनका पूरा का पूरा एक पार्ट चलता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इफ यू सी द विजयनगर बहामनी कॉन्फ्लिक्ट, तीन चार चीजों के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था इनका। सबसे बड़ा था रायचूर दोआब। ठीक है, नंबर टू इट वाज अबाउट कंट्रोल ऑफ द फोर्ट्स। नंबर थ्री इट वाज आल्सो फॉर रिवेंज पर्पस। उसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, these were the factors responsible for that. ठीक है, इनिशियली इनके जो सबसे फेमस स्ट्रॉन्ग किंग थे दैट वाज देवराय सेकंड। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट रूलर अमंग द फर्स्ट डायनेस्टी दैट इज नोन एज संगमा डायनेस्टी। एंड ही वाज द वन who strengthened his cavalry with trained Muslim soldiers. The vast empire received tribute from Sri Lanka according to Abdul Razzaq, who came from Persia. After him, there was a crisis in the kingdom, okay? And finally the crisis was averted with the rise of Salwa dynasty. The Salwa dynasty eventually had one ruler, okay, who was strong like Salwa Narasimha. But once Salwa Narasimha died, it led to the rise of Tulwa dynasty. And the most famous ruler of this is Krishna Dev Raya. And Krishna Dev Raya is the one who belongs to this third dynasty. He ruled from 1509 till 1529. 20 साल से उन्होंने रूल किया. And he was the contemporary of Babur. Babur came in 1526. Babur himself died in 1530. 4 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। जब उन्होंने लिखा था पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इन इस बुक नोन एज के बाबरी, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर कौन सा था? विजयनगर एम्पायर। तो इनके बारे में वहां से भी टेस्टिफाई किया जाता है। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर अंडर हिम। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज उन्होंने बनाई थी। ही वाज समवन हु वाज गिविंग पैट्रोनेज टू इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनफैक्ट इनके टाइम का जो आर्किटेक्चर है वो सबसे ज्यादा फेमस है। राइट, then after him again there were succession disputes and finally Achyuta Deva Raya. Okay, he was the one who remained in power and later on during this time itself, okay, the power थी किसके हाथ में पहुंच गई थी? रामराय की। एक जो बैटल होगी इन दोनों के बीच में, that is the battle of Panikota. It was fought between the states, the Deccan states and Vijayanagar. And so पूरी की पूरा जो विजयनगर एम्पायर is going to come to an end. In fact, जो विजयनगर एम्पायर है, its initial capital was Hampi. It was in Karnataka. Later on, they shifted their capital to the region of Andhra. The capital was Penukonda. The later dynasty, which is ruling from Penukonda or the Arabidu, this dynasty was relatively having decentralized form of governance. And under them, one system became very strong. That is the system of Nayakas. These Nayakas, they were the military governors. They were autonomous.
and their support was very important for the king. The system of Naikas become very famous under the last century. इससे पहले भी था लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस हो गया and they became autonomous. And these Naikas, they used to get a piece of land which is known as Amra. That's why they were often known as Amar Naikas. Because Amar was a piece of land which was given to them. ठीक है, इस एम्पायर के ऊपर एक थियोरी भी है, एक डिबेट भी है, तो बोलते हैं सेगमेंटरी स्टेट। अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट याद रखना देयर इज अ मॉडल नोन एज सेगमेंटरी स्टेट मॉडल। एक हिस्टोरियन है बाय द नेम ऑफ बर्टनस्टीन। बर्टनस्टीन केम आउट विद दिस मॉडल। विजयनगर वाज अ सेगमेंटरी स्टेट। ठीक है, सेगमेंटरी स्टेट के सिर्फ एक बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, इट मींस दैट देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉलिटिकल सॉवरेंटी वर्सेस रिचुअल सॉवरेंटी। तो बर्टनस्टीन ये कहते हैं विजयनगर एम्पायर के पास पॉलिटिकल सॉवरेंटी नहीं, दे वर ओनली हैविंग रिचुअल सॉवरेंटी। जैसे आप देखो, वी हैव टू ऑफिसेस, वन इज प्रेसिडेंट, द अदर इज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास क्या रहती है सर? रिचुअल सॉवरेंटी, कि भाई आज को एक इंपॉर्टेंट दिन है, मैं छोटी सी स्पीच दे देता हूँ या दे देती हूँ, ठीक है, बट द रियल पावर ऑलवेज रिमेन्स विद द प्राइम मिनिस्टर। दैट्स व्हाई ही आल्सो सेज कि भाई विजयनगर एम्पायर के अंदर भी ऐसा ही था, पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी वो उनके पास नहीं थी, सॉवरेंटी नहीं थी, वो पावर किसके हाथ में थी? नायकास के हाथ में थी। किंग के पास सिर्फ क्या था? रिचुअल सॉवरेंटी। ऑन द डे ऑफ राम नवमी, ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन, दीज नायकास यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू गिव गिफ्ट टू दी, और बाकी टाइम हर कोई अपना अपना भार। बट दिस इज नॉट अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ मॉडल। ये जो सेगमेंटरी स्टेट का मॉडल है मोस्टली ट्राइब्स के लिए बनाया जाता है, ट्राइबल सोसाइटीज के लिए, जहाँ पे क्या होता है कि भाई इफेक्टिवली पॉलिटिकल अथॉरिटी इज रिलेटिवली ऑन द वीकर साइड। यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेट जो इतने बड़े टेरिटरी के ऊपर रूल कर रही है, वहां पे अभी मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे से देखो कुछ डिबेट्स, अभी तो हम लोग थोड़ा सा कहानी के हिसाब से आगे जा रहे हैं। लेटर ऑन व्हेन वी revisit medieval, will take around 25 lectures, and in these lectures many lectures will be linked for these kinds of topics which will improve your understanding of the overall। भाई क्योंकि हम लोग यहाँ से देखो मस्ती के लिए नहीं है, मस्ती के लिए हो तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर 4 लेक्चर बहुत सारी स्टोरी है और भी बहुत काम की होंगी। जैसे कि इबन बतूता करके एक ट्रैवलर आए थे इंडिया में, तो जब वो वापस जब इंडिया आए पहली बार तो उनको कोर्ट में बुलाया, उनको बोले आप तो हमारे अजीज हो ना, अजीज मतलब वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है ना, 2 साल बाद जेल में डाल। तो ऐसा ही किया जाता है, बेस्ट फ्रेंड है ना, धोखा दे दो, वो उस टाइम के कटप्पा जो मन में आया कर देते। तो अच्छा लगता है ये सब स्टोरी सुना, लेकिन ऑप्शन में हमारा काम क्या है, हम क्या समझेंगे इस टाइप की थोड़ी कंसेप्चुअल चीज। बिकॉज सपोज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू, तो वहां पे फिर इबन बतूता की कहानी नहीं सुना पाओगे, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे पास करती है ना, मूड को अच्छा कर देगी हम सब लोगों के, तो वो नहीं बोल पाओगे। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज अबाउट स्पेशलाइजेशन। एक स्पेशलाइजेशन स्पीसीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ये सब जो कहानी सुनाने का काम है, ये पॉलिटिशियंस करते हैं। ये काम किसका है? पॉलिटिशियंस का। दिक्कत क्या होता है ना, बच्चे पॉलिटिशियन बनने ब्यूरोक्रेसी की क्लासेस में आते हैं ना, कि यहाँ बैठ के कहानी सुनाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे पॉलिटिशियन बन सकते हो आप, उससे आप ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते। कंसेप्ट नहीं आता, लिख नहीं सकते, ऐसे सिर्फ पॉलिटिशियंस होते हैं इंडिया में ना। पॉलिटिशियंस का काम फिर भी काम चल जाता है इन तरीके से, लेकिन आज तो पॉलिटिशियंस बहुत एजुकेटेड भी है इंडिया के अंदर, कि बिल्कुल नहीं। बट एक वो रहता है ना कि रील्स वगैरह की दुनिया जो चलती रहती है कि हाँ सिर्फ कहानी सुना के छोड़ दिया, उससे ऑप्शन कवर नहीं होता। तो इसलिए जब हम बाद में रिविजिट करेंगे तो हम ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे, हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़ पकड़ के करेंगे, हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स लेके आएंगे। जैसे कि नीलकंठ शास्त्री फिर काउंटर करते हैं बर्टन स्टीन। बर्टन स्टीन बोलते हैं सेगमेंटरी स्टेट, वो कहते हैं नहीं सेंट्रलाइज स्टेट। इनके बीच में एक अलग डिबेट चलती है हिस्टोरियंस के बीच में। फिर कोई एक और हिस्टोरियंस आएंगे, वो कहेंगे नहीं फ्यूडल स्टेट। So you should have understanding of these keywords. What's the difference between centralized
सेगमेंट्री, ड्यूडल, ऐसे हवा हवा में नहीं लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग इसलिए जब हम करने जाते हैं तो आंसर राइटिंग के अंदर ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स को यूज करना सीखना पड़ता है, and इसीलिए आप सब लोगों को ये इसके तैयार भी होना है, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस बैटल ऑफ तालिकोटा। द बैटल ऑफ तालिकोटा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो स्ट्रेंथ थी वो चली गई थी ना, आत्मा चली गई थी, शरीर थोड़ा टाइम और चलता रहा, ठीक है। तो इट कंटिन्यू टिल 1670s, दैट वाज द एंड ऑफ दिस लास्ट वन। के बाद सिर्फ नायका, ठीक है, उसको हम नायका सिस्टम बोलते हैं। देन द मुगल एम्पायर, ठीक है। दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, द मुगल एम्पायर। एटलीस्ट थोड़ा सा नाम वाम जान लेते हैं, किसकी क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा एक कहानी जान लेते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन वाज बाबर। बाबर वाज अ सोल्जर, बाबर वाज अ रियल सोल्जर। बाबर कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, राइट, समरकंद के एरिया से आए थे। he was himself from the family of the kings। इनका खुद का अपना एक छोटा एरिया था समरकंद, बट he lost it। there was a politics which was going on, बहुत छोटी उम्र के थे, and he lost। and after losing his kingdom he came towards अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आके इन्होंने देखा कि भाई इंडिया में तो बहुत डिस्टेबलाइजेशन है इस साइड में, तो धीरे धीरे करके कैप्चर करना शुरू किया। he captured Multan, then he even went all the way up to Lahore। then he realized by 1524 कि जब मौका मिलेगा तो एम्पायर तो इंडिया में ही बनेगा, ठीक है। मौका मिल गया। मौका कैसे मिला? दौलत खान लोधी ही सेंट ए इनविटेशन। ऑफन सोर्सेज से राणा सांगा ने भेजा न्योता कि आओ और लोधी डायनेस्टी को फिनिश कर दो। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, जस्ट लाइक तिमूर इज गोइंग टू कम, फिनिश ऑफ एंड देन ही विल लीव। लेकिन बाबर के पास अलग आइडिया है। बाबर ऑलरेडी सताए हुए थे कि मैं कहाँ जाऊँ बताऊँ, हमारी जगह तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो जब इनके पास न्योता आया था दौलत खान लोधी का पहली बार, जब भेंट आने वाली थी, तो इन्होंने सोचा था अगर मुझे किसी ने भेंट में आम दे दिए, अब एवरीबडी इज लुकिंग फॉर गुड साइंस इन लाइफ, है ना, तो इनके पास आम ही भेजे थे दौलत खान लोधी ने लेटर के साथ में। इन्होंने सोचा था अगर मुझे आम मिले तो पक्का चला जाए, है ना। तो इच्छा पूरी हो गई, तो आम की पेटी ही भेजी थी साथ है ना, कि आम खाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, फिर आ जाओ लड़ाई करने के लिए। तो दैट्स हाउ ही रिसीव, these were the ceremony, these were like the embassies which were sent from one empire to the, from Daulat Khan Lodi he received the invitation to come to India। India आए, he was a very strong military person, okay, he was a very strong person for coming to India। he fought multiple battles, सिर्फ एक बैटल नहीं लड़ी। the first battle was the most famous one, the first battle of Panipat। in this Ibrahim Lodi was defeated, ठीक है, Ibrahim Lodi was defeated। next comes in 1527, in this Rana Sanga was defeated, and this is known as the famous battle of Halwa, ठीक है, 1527। then by 1528 fought the battle of Chanderi, Medani Rai, he was defeated by 1528। by 1529 again the Afghan alliance was there, he was able to defeat them, battle of Agra, ठीक है, the battle of Agra। by 1529 like every year he was fighting a battle। so if you see the life of Babur, the life of Babur is the life of a soldier who is fighting non-stop, okay, fighting non-stop। and Babur eventually he died in 1530। in fact there is a story that Humayun की तबीयत बहुत खराब थी, Humayun was very ill and he prayed to the God कि आप मेरी जान ले लीजिए और इसकी जान बख्श दीजिए। ऐसा ही हो गया, ऐसा कभी कभार ही होता है, बट ऐसा हो गया। तो Humayun improved and he eventually went away। So for 4 years broadly he was just fighting every year। So the problem with Mughal Empire initially was that their founder was gone in 1530 and it was not solidified, it was not consolidated। The next person who came to power was Humayun। Now the word Humayun means fortunate and he was the most unfortunate ruler of his time। नाम के बिल्कुल विपरीत चलते थे। So Humayun he ruled from 1530। In fact when he came to power, एक लास्ट विश थी बाबर की। बाबर की लास्ट विश ये थी कि आप अकेले सारे एरिया के ऊपर राज मत करें,
डिवाइड द एम्पायर अमंग योर ब्रदर्स, सबके साथ अपना एरिया जो है वो डिवाइड करते रहे। लेकिन अभी मैं आपको आगे स्टोरी सुनाऊंगा कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी होगी इसकी वजह से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बाबर, कहानी कहाँ से शुरू होती है बाबर की? इट स्टार्ट्स फ्रॉम समरकंद, ठीक है। It starts from Samarkand region where he lost his empire. Then he came towards Afghanistan as we have just discussed. Okay. Yes. Fargana also, they were very close by. Fargana and Samarkand. These were the two areas which were very close by. Okay. और वहीं से इनकी एस्टैब्लिशमेंट शुरू होती है, धीरे धीरे वहां से निकलते हैं। Then 5 years 1519 1524 he invaded Mira, Sialkot as well as Lahore. तो रेडी खड़े थे, एक मौका कब मिलेगा, और मौका किन्होंने दिया? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ही वॉज वेटिंग कि जिस दिन मुझे आम मिले मैं निकल लूंगा पानी से, ठीक है। एंड दोस्त वाज सेंट बाय दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने एम्बेसी दिया, ठीक है। बट बाय द टाइम ये पहुंचे इंडिया, दौलत खान लोधी पलट गए। उन्होंने कहा था मैं मदद करूंगा आप इंडिया आओ, बट ही डिड नॉट। दैट्स व्हाई ही डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ दौलत खान लोधी। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो लाहौर से उनको डिफीट किया। Then came the Battle of Panipat. He used the artillery to the best possible use, and he was the one who was able to defeat Ibrahim Lodi. Battle of Khanwa लड़ी जाती है, okay, and in this he defeats Rana Sanga. Rana Sanga is defeated in this. Chanderi है, here we see the defeat of Medani Rai. Chanderi उनको हराते हैं. Last the Battle of Bhakra. Here the Afghan alliance was there, like the brother of Ibrahim Lodi, Mahmud Lodi, and the Shushat Khan. These two were defeated. 1530 he himself was gone. इनके बारे में जब हम एस्टिमेट करते हैं तो वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स दिस तुजुके बाबरी, ठीक है। तुजुके बाबरी जो है इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी, एंड दिस वाज रिटन इन टर्किश लैंग्वेज। बाद में इसको पर्शियन में चेंज किया जाता है, उसका नाम क्या है? बाबरनामा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बाबरनामा, राइट। इंडिया के बारे में भी लिखते हैं, द चीफ एक्सीलेंस ऑफ हिंदुस्तान इज दैट इट इज अ लार्ज कंट्री एंड इज अबंडेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और अगली कन्वीनियंस क्या है? द वर्कमैन ऑफ एवरी प्रोफेशन एंड ट्रेड आर इनन्यूमरेबल एंड विदाउट एंड। खत्म ही नहीं होते लोग, उतने लोग हैं इंडिया के, जो मन में चाहे करो यहाँ पे आके। दैट्स द आइडिया दैट ही केम विद बाबर। इनफैक्ट तुजुके बाबरी कभी मतलब जब पास हो जाए उसके बाद पढ़ना कभी बैठ के, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई कि इंडिया के अंदर लोग लुंगी पहनते हैं, यहाँ पे आके लोग खिचड़ी खाते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ, कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा वेदर नहीं लगता मुझे, आर्किटेक्चर अच्छा नहीं लगता मुझे, यहाँ पे लोगों का सिमेट्रिक नहीं आर्किटेक्चर। इंडिया में जब ये आएंगे अपने चार बाग स्टाइल लेके आए, जो एक सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ क्या है? आर्किटेक्चर। एंड ही क्रिटिसाइजेस लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज नेचुरली अफगानिस्तान में रहेंगे तो यहाँ तो गर्मी ज्यादा ही लगेगी इस साइड आओगे तो, ठीक है। But then comes Humayun. Now, the biggest problem with Humayun was that he was not having a stable kind of a system. He was having a weak financial system. He was not a good military general. अच्छे military general थे नहीं, ठीक है। अब होता यही एक्चुअली, जो राज घराने में पलते हैं सुबह से लेकर शाम तक सिक्योरिटी को कहाँ लड़ाई करें। तो ही वॉज वन ऑफ देम, लेकिन फिर बाद में क्या बन गए? एम्पायर बन गए। इनके ब्रदर थे बाय द नेम ऑफ कामरान। जैसे डेथ होती है इनके फादर की, बाबर की, कामरान इज गिवन द रीजन ऑफ काबुल एज वेल एज कांधार, वो उनको दे दिया जाता है, ठीक है। एंड इवन लेटर ऑन पंजाब वेंट टू कामरान। दिस वाज द टाइम वेयर वी सी द राइज ऑफ एन अफगान बाय द नेम ऑफ शेर खान। शेर खान हु विल लेटर अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह। इनफैक्ट शेर खान जो थे वो कोई छोटी उम्र के नहीं थे, he was relatively a middle-aged man at this point of time. By the time of he died in 1545, broadly, he was more than 60 years old. और बाबर ने कहा था कि एक इंसान से हमेशा बच के रहना, वो कौन है? शेर खान। शेर खान was the one who was going to play a very important role in the ouster of him. तो क्या होता है? In 1832, हुमायूं कैप्चर करते हैं फोर्ट ऑफ चुनार। इसमें शेर खान सॉरी बोल के चले जाते हैं कि मैं आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। He raised the banner of revolt. A very tricky person. बोला जाता है कि शेर खान he was having the quality of lion and fox. लड़ाई करनी भी आती थी और झूठ बोलना भी आता था, दोनों में फर्स्ट थी, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत आगे जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है जिनके अंदर, ठीक है। वन मोर बिग राइवल ऑफ हिम वाज बहादुर शाह।
Bahadur Shah was ruling in the region of Gujarat and he was trying to annex the region of Rajasthan, and that led to the beginning of the challenges for Humayun. तो हुमायूं सोचते हैं कि सबसे पहले हम गुजरात चलते गुजरात को कैप्चर कर, सबसे चीज पहले चीज यही सोचते हैं. द मोमेंट ही रीचेस गुजरात ही रियलाइजेस उनके एक छोटे भाई थे बाय द नेम ऑफ अस्कारी. अस्कारी वो वाला छोड़ के वापस आगरा जाने की तैयारी कर लेते हैं. ठीक है. नाउ हुमायूं कम्स इन दिस पैनिक अटैक कि अस्कारी गुजरात का एरिया छोड़ के आगरा क्यों जा रहे. ही थॉट कि अपने आप को वहां पे जाके एम्परर डिक्लेयर ना कर दूं, मैं गुजरात में रह जाऊंगा और अस्कारी क्या बन जाएगा, किंग ऑफ इंडिया. तो इनके सारी की सारी जो दिक्कतें हैं इनके भाई के आसपास ही घूमेंगी. बाद में ही इज एबल टू स्टॉप अस्कारी. ठीक है कि भाई ऐसा मत करो. फाइनली आफ्टर द विड्रॉल फ्रॉम गुजरात ही वेंट्स टुवर्ड्स बंगाल. व्हेन ही वेंट्स टुवर्ड्स बंगाल तो इनके दूसरे भाई हैं वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है, बाय द नेम ऑफ हिंडाल. So the biggest challenge in the life of Humayun was how to handle with his own brother. कामरान जो थे he had taken control of Kandahar and Kabul. ठीक है, ऐसे ही हिंदाल है, अस्कारी है. These three brothers they made his life hell. And on the top of it he had to fight with Bahadur Shah of Gujarat. He had to fight with Sheikh, okay, from the region of Bihar. So he proceeded to Agra to quell the rebellion, right? बट उसी टाइम पे शेर खान को पता चल जाता है एंड शेर खान फाइट्स हिम इन दिस फेमस बैटल ऑफ चौसा. शेर खान अटैक इन द नाइट. नाइट में ही अटैक कर दो, छोड़ो सुबह सुबह का बाद में, इथिकल वॉरफेयर बाद में देखेंगे, पहले जीत जाते हैं उसके बाद देखेंगे. तो ही इज एबल टू विन चौसा. मुश्किल से जान बचती है किसकी, हुमायूं की. एक नावक थे, ये बोटमैन वाज एबल टू सेव. एंड फाइनली द बैटल ऑफ कन्नौज. अगेन हियर the army of Humayun was completely routed. और शेर खान इसके बाद पूरे के पूरे पिक्चर में आते हैं. शेर खान, his original name was फरीद. फरीद खान नाम था उनका. टाइटल शेरशाह का इसलिए था because he was able to kill a lion with his bare hand. That's why he was having the title of शेर शाह. इसलिए इनका नाम आया था शेरशाह. He is the one who later on started creating a very strong empire. In fact, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स बाद में अकबर करेंगे उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन बना के जाते हैं, शेरशाह बना के जाते. ठीक है, तो शेरशाह इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. He lived for only 5 years as an emperor of India, but in those 5 years he did n number of एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर देते हैं, सरकार और परगना का एक सेटअप क्रिएट करते हैं. सेकंड, ही इज एबल टू कम आउट विद द फाइनेंशियल रिफॉर्म. बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज पे की जाती थी. said no, there going to be only 2 custom duties, one at the entry point and one at the level of production. बाकी सारी unnecessary duties को बंद कर. So he was able to channelize the whole administration in a very systematic manner. He died in 1545. This was the point of siege of Kalinjar. Kalinjar अब एक फोर्ट है बहुत ही फेमस जहाँ पे इन्होंने उसको बंदी बना रखा था. But there was misplaced blast in which he eventually died. After him, from 1545, his son Ismail Shah carried forward the legacy. But by 1545, things were 1555 in fact. 1553, we see the death of Ismail Shah, and later on, it became a very problematic thing. Right? For 10 years, his weak successors ruled, और इस्लाम शाह जो है, जिनके सन थे, he continued till 1553. From 1553 till 1555, for 2 years, there was a big challenge in this empire. And finally, we see a opportunity. An opportunity किसको मिलती है? हुमायूं. When he was ousted from India, he went to Persia. तो वहाँ के शाह ने इनको पनाह दी थी. He was staying there in the safe haven, and effectively he took the help. He took the army of the Persian and he captured Kandahar as well as Kabul. Okay, so he defeated his own brother and captured this. And later on, he came towards Agra. But जैसे इन्होंने regain किया था Delhi region, he fell from the library and he died in 1555. और इनके ऊपर एक बहुत फेमस लाइन लिखी जाती है बाय स्टैनली लेनवुड. स्टोरियन है ना. ही स्टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड ही स्टम्बल्ड आउट ऑफ इट. जिंदगी भर गिरते पड़ते रहे, गिरते पड़ता ही निकल गया. ठीक है, ही स्टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड ही स्टम्बल्ड आउट ऑफ इट. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ हुमायूं. 1530 में स्टार्ट होती है इनकी जर्नी एज एन एम्परर और ये एंड होती है इन 1555, जिसमें बीच में फॉर एटलीस्ट 10 to 15 years he was not in India. ठीक है, that's the story of Humayun. The most important personality is Akbar.
Akbar is the most romantic personality of medieval India. He is the person, when he came to power, he was a very young age. 1542 he was born. Okay, 1542 he was born. He was crowned at the age of 14 because just after the death of Mayu, he had to be crowned, and then he had to immediately fight the second battle of Panipat. But naturally, he could not fight on his own. He was having a regent or a guardian or a caretaker. That person was Bairam Khan. So Bairam Khan fought all the battles during the initial phase. Okay, starting from 1556 till 1560. पहले जो 5 साल थे अकबर की रेन के, largely कौन रूल कर रहा था? बैरम खान. ठीक है. So Akbar will create a big empire, a large empire, at least the North India, even Afghanistan will be under his control. The Battle of Panipat. The second Battle of Panipat, as we all know, was the Humayun was able to take care of the Delhi region. Eventually, one person by the name of Hemu, he was the one who was fighting on the behalf of the even the Afghans. So he created this alliance. He was very victorious in capturing multiple parts of the middle as well as up to Agra. But a stray arrow met him in the eye, and जैसे ही गिर जाते हैं, eventually that led to the end of the whole of this. The whole resistance was gone, and eventually we see the rise of Akbar. की अगर हम बात करें, that Akbar created an empire in a very stage formation. Slowly करके उन्होंने उसको बनाया. Like he started with Malwa, then he captured Gondwana. आपने न्यूज़ में सुना होगा, रानी दुर्गावती काफी न्यूज़ में रहती है. ठीक है. In last few months, Rani Durgavati, there has many articles and multiple. Rani Durgavati, she was the one who was fighting against the time of Akbar. He was defeated. Mewar was then captured. Okay. Later on, he went towards Gujarat. Gujarat was captured in 1573. Okay. Then he went towards Bihar and Bengal in 1576. Then Kabul, Kashmir, and then towards Sindh in 1591. Then he went towards Deccan. सबसे पहला जो एरिया कैप्चर किया वो कौन सा था? Khandesh. After Khandesh, he went towards Berar, then some part of Ahmednagar, and finally, by the time he died in 1605, he was able to create an empire which was very strong and based upon sound institutions. Institutions में जैसे कि 2-3 institutions बहुत important थे. The first famous institution was the Mansabdari system. Mansabdari was a dual rank system. अंदर दो रैंक दी जाती थी. एक को बोलते थे जात, दूसरे को बोलते थे सवार. ठीक है. जात वाज द रैंक. जैसे कि आप भी ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपको एक रैंक दी जाएगी स्पेसिफिकली. ठीक है ना, कि भाई आप असिस्टेंट कमिश्नर हो, कमिश्नर, जो भी आपके रैंक हो. और सवार जो था, इट वाज लाइक अबाउट हाउ मेनी कैवलरीमैन यू आर गोइंग टू कीप फॉर दैट पर्पस. तो ये इस तरीके से उन्होंने एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दिया था फॉर द मुगल एम्पायर. ही ऑल्सो इंश्योर्ड कि भाई अच्छा एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए, और इस सिस्टम को बोलते हैं एने पैसाला. उसमें पिछले 10 साल की एवरेज ली जाती थी टू कलेक्ट. फिर इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया, इन्होंने प्रोविंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, एंड ही आल्सो सॉलिडिफाइड द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द होल ऑफ द मुगल एम्पायर. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ही इज कंसिडर्ड द रियल कंसोलिडेटर ऑफ मुगल एम्पायर. क्योंकि देखिए, बाबर के पास टाइम नहीं था, हुमायूं के पास हिम्मत नहीं थी ये काम करने की, और हुमायूं के पास उतनी इंटेलिजेंस भी नहीं थी, एंड ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट शेर शाह. ही वाज नॉट हैविंग टाइम. So it was Akbar who ruled for a very long time. 1556 से स्टार्ट होता 1605 तक जाते हैं, 50 साल रूल होता हुआ. And in 50 years he is able to create a very large empire for himself, and even solidification is done in a very realistic manner. One very important policy that he pursued was the Rajput policy. Rajput policy means that he knew he could take two courses of action with respect to Rajput. Either he can fight with them all the time. Second, he could integrate them into his own empire. तो उन्होंने second policy को choose किया. ठीक है. He was very tolerant with respect to religion. In fact, उन्होंने जजिया को क्या कर दिया था? Abolish किया. Jizya, as I've already discussed in the previous class, it's a kind of a protection tax which is taken from the non-Muslims. ठीक है ना, जिसको हम जिमीज बोलते हैं. जिमीज आर द प्रोटेक्टेड पीपल. उन्होंने उसको हटा दिया. That's a very kind of a encouraging kind of a sign for a ruler who is not mistreating any of the people in his empire. Marriage alliances was built by him in order to get the maximum with these Rajput. He also gave them higher position like Raja Man Singh and बीरबल. राइट, स्टोरी तो चलती रहती है अकबर और बीरबल की. राइट,
Respectful treatment was given to everyone. So like this, only two areas, Mewar and Marwar. As all of us know, Rana Pratap Singh. Rana Pratap Singh, he was a very patriotic person, and he was someone who was never going to accept the Mughal Empire. And he fought this famous battle of Haldi Ghati, which was fought with Akbar, right? And Chandra Sen of Marwar. These two people never accepted the rule of the Mughals. Religious policy, जब हम इनकी religious policy की बात करते हैं, it is also very wide. Like one of the important element of this was Sulh Sul. It means peace to everyone. He also established Ibadat Khana. Ibadat Khana, now this was an area, this was, you should know that initial capital was Agra. Okay? Initial capital of Mughals was Agra. For some times, he also made Lahore as his capital. Okay? But the second capital treatment was always given to Fatehpur Sikri. But Fatehpur Sikri, he created Ibadat. ठीक है, फतेहपुर सिकरी कुछ टाइम के लिए रहा, बाद में इसको अबैंडन कर दिया गया बिकॉज देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई वाज नॉट देयर इन द रीजन ऑफ फतेहपुर सिकरी, तो इसकी वजह से उसको बाद में छोड़ा जाता है. बट एनीवे, फतेहपुर सिकरी, दिस इज वेयर ही एस्टैब्लिश्ड व्हाट इज नोन एज इबादत खाना. Ibadat Khana means where there used to be discussion of spiritual matters. There used to be discourse with multiple religious personalities. Like there used to be people from Christianity, Zoroastrian, Hindu, Jain, and even atheists. Like if हम famous लोगों का बात करें, Hindu leaders like Purushottam used to go there, and Devi. Zoroastrian we had Meherji Rana, and from the Portuguese he invited Akbar as well as Montserrat. Among the Jain there used to be Veera Vijaya. So what they used to discuss about God, the idea of God. और ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, what was इबादत खाना for specific purpose पूछा था उसको. Then the concept of Deen Ilahi, where he tried to show that there is only one God, or there is monotheism and there is spiritual unity among the people. Then eventually he tried to create a secular state in general. And during the later stages of his life, he even allowed the Christian missionaries to convert the royal people of royal household. So he was someone with very high level of tolerance, very high level of secularism was there in his head, and he was not guided by only the ideas of Jahangir. The problem with Jahangir was that Jahangir was again not a very good military general. He was addicted to wine. He has written his own autobiography. उसमें लिखते हैं, I have given up my whole life only for two things: one, wine, and second, one woman. And that one woman was Noor Jahan. Right? So two things were there in his life. जिसके पीछे ये उन्हीं के पीछे ध्यान रखते हैं. ठीक? During his time, his eldest son by the name of Khurram, he revolted. Khurram को actually bless कर दिया था by one of the Sikh guru by the name of Arjun Dev. So effectively, what he did later on, the Khurram, he was blinded, and Arjun Dev was executed. So that's the reign of Jahangir. With respect to foreign relation, during this time, you see the entry of William Hawkins as well as Thomas Roe. So British इन्हीं की reign में आते हैं, and during this time they get the concessions also to open factory at Surat. Okay, so Khurram के rebellion के बाद, which was with the help of General Mahabharata Khan, बाद में succession होता है. In fact, during his time, what happened? Noor Jahan, she became very important. Along with her father as well as her brother, they created a junta. उन्होंने एक अपनी alliance create की जिसको बोलते हैं नूर जहां junta. And finally, last में नूर जहां junta, it comes to an end, and we see the entry of Shah Jahan. Okay, in his times, Malik Amber was a very formidable, and he was from the state of Ahmednagar. ठीक है, तो ये बहुत लंबी फाइट चलती है, and later on, if we see that even the Marathas got trained during the time of Ahmednagar. Okay, under the Malik Amber. Then Shah Jahan. Shah Jahan was again a person who was having a very relaxed kind of life. The moment he came to power, he was a very religious person also. Okay, so he followed traditional policies of Islam. He was very happy about his connection with Central Asia. He used to put that in limelight from time to time. He annexed Ahmednagar despite the efforts of Malik Amber. Okay, he did that. This was the first nation he annexed Kandahar in 1638, taking a coordinating portion of that. But later on, this Kandahar region again go back to the Persian. तो वापस हाथ से निकल जाएगा. He was also someone who tried to capture some areas of Central Asia. अकेले लोग,
ठीक है, अकेले लोग हैं जो कि उस एक्सपीडिशन पे जाने की कोशिश करते हैं टुवर्ड सेंट्रल एशिया, बट इट वाज नॉट a full-fledged success as such, and later on he had to revisit that policy. Okay. And his eldest son's name was Dara Shikoh. Now he wanted Dara Shikoh to become the next ruler, but we were not that much lucky, and there was a war of succession, and the next person who came to power was Aurangzeb. So Aurangzeb, he came to power with the help of the religious classes. He came to power with the help of ulemas, and that's why from the beginning he was a very religious fanatic person. He is often considered as a bigot. Bigot means someone who does not entertain any idea of anyone else. They believe that their own ideas are the best. They are the final ideas. ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? Bigot बोलते हैं. ठीक है? So he is often considered as a bigot, and in his reign, have around that is again very similar to Akbar. 50 years के आसपास की इनकी भी reign है. In those 50 years, we can divide into two parts. First 25 years he was broadly in North India, and the last 25 years he was in Deccan. Okay, so the first 25 years, to a certain extent, they were very successful. He was able to even quell the rebellion of Jats, Supnami, and even the Sikhs during that time period. But one thing which became problematic for him is that he wanted to have direct control over the whole of India, and that was not possible. And that's why later on he went towards Deccan, and the formidable enemy for him were the Marathas, and that is going to create the overall outcome. Right? So this long campaign, which begins in 1682, it will continue till 1707. Right? Even though he was able to capture these two specific areas, both Ponda as well as the both of them, they could be captured by him, but eventually this Deccan policy became the big responsible for the straining of the Mughal forces. He kept on fighting with the Marathas. Outcomes did not come. When he executed Shambhaji. Shambhaji was executed in 1680. That the fight was continued. Rajaram, who was the other son of Shivaji. After Rajaram, his widow carried on the fight. Her name was Tarabai. So she continued the fight. And by the time of early 18th century, एक time तो आता ना जब घटिया successors आते, and that was the wrong time for the Mughals. Right after his death, Bahadur Shah I came to power. Bahadur Shah I का टाइटल था शहंशाह बेखबर. शहंशाह बेखबर सब क्या करेंगे जिंदगी के अंदर. So by that time he was buying peace from everyone, left, right and center. कि भाई किसी तरीके से हमारी क्या होनी चाहिए, peace हो जानी चाहिए, right? So at that point of time he released Shahu. Shahu, he was the son of Shambhaji. उनको ऊपर रिलीज कर दिया. After that Shahu goes and he वो एक ही अच्छा काम करते हैं सबसे बड़ा, और वो सबसे अच्छा काम क्या है, किसको अपॉइंट करते हैं, विश्वनाथ को पेशवा बना देते हैं. बालाजी विश्वनाथ carries on the next phase of rise of Marathas. So starting from 1713 till 1818, the first phase of Marathas that belongs to the Chhatrapatis, which starts from Shivaji Maharaj, and it ends broadly at the time of Shahu. And from Shahu, it's all about the Peshwas, the Balaji Vishwanath, Balaji Bajirao, and the next one was Madhav Rao, next was Narayan Rao. It continued like that, right? And then the younger son Madhav Rao II came to power. The last Peshwa was Bajirao II, right? To sign a treaty with the British. That was the end of it. Anyway, so his Deccan policy was the biggest failure, as we all know about it. Alright. Now let us try to understand a little bit about Marathas also. Okay. Architecture will later on take in detail. Okay. All of you know that their architecture is world famous. Starting from Akbar, the peak is going to come during the time of Shah Jahan, and Taj Mahal is the most important reflection of that. Okay. Even paintings improved during their time. During the time of Delhi Sultanates, the concept of painting was not entertained because it was considered un-Islamic. But starting from the reign of Humayun, under the time of the Mughals, because Humayun, he went to Persia, and the Persians were Shia, and they used to have lots of paintings. And their two famous painters came to India, Abdul Samad and Mir Sayyid Ali, and from there the concept of paintings got elaborated, and it got the support of the state as well. In fact, Akbar established Tasveer Khan. Tasveer means painting. When it was established here, Jahangir was probably the best person with respect to painting.
उनके टाइम पे 3-4 अच्छी अच्छी चीजें शुरू हुई, जैसे कि पोर्ट्रेट पेंटिंग शुरू हुई, 3D पेंटिंग पे एक नई जान आई उस टाइम, बॉर्डर्स वगैरह बनाना शुरू किया। ही हैज हिमसेल्फ रिटन कि अगर 10 पेंटर भी एक पेंटिंग करेंगे तो बता सकता हूँ किसने क्या काम किया। ठीक है, तो वो बैठ के सिर्फ वाइन पीते थे और पेंटिंग करते थे, है ना। तो नेक्स्ट लेवल शौक आ चुके थे। फर्स्ट जनरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं थी ना उनके पास कि एम्पायर तो है ही हमारे पास, मजे कितने कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम खत्म हो गई थी लाइफ की, सिर्फ क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। इंडिया की तरह नहीं कि पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, हमारे पास सब कुछ है। द ओनली थिंग वी नीड इज हाउ टू लिव आवर लाइफ। एनीवे, व्हेन वी टॉक अबाउट मराठास, मराठास हैव a glorious past. Okay, if you see the history of Marathas, the father of Shivaji, his name was Shahaji. Shahaji, he has served Deccan states. Okay, for a brief interval, he even served the Mughals also. Right. After him, we see the rise of Shivaji. Now, when we see the personality of Shivaji from a very young age, he was having the potential to become a very strong personality. From being a teenager, started capturing forts. Okay, from a very teenage, and with the period of time, he became one of the strongest personality in the whole of Deccan. Okay, so if we just see the when he became the king, you should remember in 1674, right? General, right? In 1674, we see the creation of the whole throne for him, and that's how we see the beginning of the Maratha Empire. But in the same year, in 1674, General Venkoji he conquered Tanjore and he ended the Nayak rule. And Tamil region also they continued just like that. Right? Why did we see the rise of Marathas? There's a very big debate over this. Like some of the historians they say Marathas rose in order to out the Mughals from it. Because it was a religious fight. The Mughals were the outsiders. But this is not a correct interpretation. Okay, this is not a correct interpretation. Like Mughals were not like British. The British remained perpetual foreign. वो कभी इंडिया का पार्ट बने ही नहीं. But Mughals they came, they married, they had good relationship. So by the time of this, we see the rise of the Marathas. By the time it was even more than 150 years. It was more than 150 years. There was no question of being announced. That doesn't make any sense. But few things did play a very important role in the rise of Marathas. Like one of the most important factors responsible for them is their geography. They live in this mountainous region which requires hard work, which requires a lot of potential to be there. And that's why their geography played a very important role in the development of their attitude, in the development of their warfare. नाना पाटेकर की फेमस डाल है मराठा मरता है या मारता है. So that's purely about the attitude which gets created in the mountainous regions because the resources are scarce. So geography played a very important role in the rise of Marathas. They learned this guerrilla method of warfare. Guerrilla means indirect method of warfare. Plains में क्या direct fight होती है. Guerrilla में हमेशा raid होती है, finish and then you go. So this guerrilla method of warfare developed because of this. Yeah. Okay. Second, they believed in loyalty, courage, discipline as well as endurance. The qualities were very, very important. Plus, Bhakti movement played a very important role in their lives. It is known as Maharashtra Dharma. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गुरुज थे of the Bhakti movement which played a very important role. Like people like Tukaram, Ramdas, Eknath, they were the leading light, who were responsible for that, right? And it is often considered this played an important role in the rise of the whole of Marathas. External causes क्या थे? There was a gap between the Marathas and the Mughals. और वो दो कौन सी डेक्कन स्टेट्स थी? बीजापुर एंड गोलकोंडा. Both Bijapur and Golconda, they were coming under the stress of the Mughals. So it was up to the Marathas to safeguard themselves. Now they could not depend upon Bijapur and Golconda. They knew कि भाई ये तो कभी भी खत्म हो सकती है. उसके बाद हम क्या करेंगे? That's why it was required that they should create their own bastion of defense. And this is how we see the coronation of Shivaji. Shivaji, he is coronated in 1674 and he becomes Chhatrapati in that year. And with the period of time, he will continue till 1680. He is going to continue with the warfare against the Mughals. He will die in 1680. From 1680 till 1689, it will be the time of Shambhaji. Shambhaji, his son, is going to become Chhatrapati. From 1689, it will be carried forward by Rajaram. Okay, and by 1700, when Rajaram would not be there, and
Tarabai is going to continue, right? Tarabai was having a son by the name of Shivaji II. Okay, he was having a son, Shivaji II, but he was very small, very young age, right, at that point of time. The moment Shahu came out of jail in 1707, Shahu put his stake that I should become the king. Eventually, Shahu became victorious. He then appointed Balaji Vishwanath, and the rest is history. After that, the importance of king declined, the importance of the Peshwa increased multifold, and they will continue the fight against the Mughals, and they will continue fighting against the states which were left behind after decline of Mughal Empire. They fight with the Nizam, they will fight with the regions of Rajput, they will fight everywhere, and they will create one of the largest empire possible at that point. Okay. The earliest career of Shivaji, if we talk about this, he was able to defeat Afzal Khan. Right? Afzal Khan was a person who was sent by Bijapur Sultan, but he could not fight with the Shivaji, and Shivaji was victorious. Even from the Mughals, there was a person by the name of Shaista Khan. Shaista Khan tried to pursue him, but he was again defeated. The person who was able to defeat Shivaji, he was Jai Singh. He was again a Rajput, a very strong personality from the region of the Rajputana. He was able to encircle Shivaji. Then Shivaji was taken to Agra. He went there. He signed what is known as the Treaty of Purandar. Right? As per this treaty, multiple forts they were given to the Mughals. But the biggest challenge was that he was not shown respect. He was ready to accept the Mughal emperor as his lord. But since the respect was not shown at that point of time, then he eventually escaped because he was also put in prison. He escaped somehow, and after that, he got this motivation, okay, to take the revenge back. And by 1674, he was able to become. He was having a short tenure from 1674 till 1680. छोटा ही tenure रहा. In fact, his whole life, from the teenagers, he was fighting battles on a daily basis. That consumes the energy of your body. Okay, and eventually he died by 1680. Okay, the coronation happened in this fort, which is known as Raigad. Okay, Raigad Fort. So Deccan campaigns, they had multiple Deccan campaigns. They were able. This was the initial area, and with the period of time, they captured multiple area in different parts of India. Okay, and then after Shivaji, as I've told you, first we see Shambhaji, the movie which has become very famous and probably because not having representing all the facts of history is Chhawa. Okay, so Shambhaji from 1680 till 1689. In 1689 he was captured and then he was executed. After that, as all of us know, his brother Rajaram continued the leadership. He also died by 1700, and then after his wife Tarabai, she carried forward, and Tarabai carried it forward in the name of her son Shivaji II. Tarabai was also very strong, like she also fought with the Mughals. But then we see the entry of Shahu. Shahu was released in 1707. After death of Aurangzeb, the next ruler was Bahadur Shah I. Bahadur Shah I now didn't want to fight with the Marathas. He said that this is the time to end it. Let us sign a peace treaty. And even Shahu recognized Bahadur Shah as his emperor. ठीक है, उसको recognize कर दिया था. Then Balaji Vishwanath became the eventual supporter of Shahu, and Balaji Vishwanath is going to be responsible for the expansion of Marathas. Okay, so once the Peshwa rule is going to begin, now all of you should know that Chhatrapati Shivaji was having a system of Ashtapradhan. 8 important officers were there. Among them, the most important was Peshwa. The Peshwas were appointed from the beginning, okay, from the 1670s itself, but the strength in this office went to next level from 1713 itself, when we see the entry of Balaji Vishwanath. And after this, it became a hereditary office. It means the family of Balaji Vishwanath was now going to have this title of Peshwa. He ruled till 1720. He died. Then further expansion was done by his son Bajirao I. Okay, Bajirao I. He continued till 1740. Then his son Bajirao, he continued. Okay, at the time of Third Battle of Panipat, the Third Battle of Panipat happened in 1761. Balaji Bajirao, he was the Peshwa.
but he did not fight in that battle. His brother Sadashiv Rao Bhau, he was the one who came towards Panipat. Who was the one who fighting? He was having his second marriage. So Peshwa was enjoying the marriage ceremonies at a time when the Marathas were fighting the third battle of Panipat, which became responsible for their defeat. Right? Ahmed Shah Abdali, even though he was a very formidable enemy, he was able to create alliance with the states of Awadh as well as Rohilkhand. Okay? And later on, as all of us understand, we see the entry of Madhav Rao. Madhav Rao stabilized the Maratha Empire again from 1761, but he himself died in 1772. After Madhav Rao, his brother Narayan Rao became Peshwa. Okay, but he ruled for a very small time, 1772 to 1773. In fact, he was killed by his palace guards, and this was mostly orchestrated by his uncle by the name of Raghunath Rao. Raghunath Rao is a very infamous figure in the Maratha history. Okay, so Raghunath Rao, he ruled for a very small time, but by that time, what happened? Narayan Rao's wife was pregnant, and she had a child, and suddenly, which is known as posthumous child. आपके father की death हुई है, but you are now then born. It is known as posthumous, and suddenly the son of Narayan Rao was supported. So Raghunath Rao, he was taken down, and the son, he was given the name of Madhav Rao II. Madhav Rao II, he was made Peshwa. Nana Fadnavis became the supporter of him. It continued till around 1796. And after death of Madhav Rao II, the last Peshwa was Baji Rao II, probably the worst Peshwa in the history of Marathas. And he signed a treaty with the British, the Treaty of Basel. So he was the one who signed the Treaty of Subsidiary Lands, which eventually ended the influence of Marathas. It was signed in 1802. Okay, so three Anglo-Maratha wars were fought. First from 1775 all the way up to 1782. Second from 1803 to 1805. And the last in 1818. So in 1818, British abolished the institution of Peshwa. इसको abolish कर दिया. Okay? And the Peshwa was sent to Bithur. और वहाँ आए हमारे उनके जो next adopted son by the name of Nana Sahib. And Nana Sahib fought for what everybody is fighting for India, pension. So he fought for pension in the revolt of 1857. तो बहुत पुराना नाता है पेंशन का और इंडिया के लोगों का कि हमारी पेंशन मत छीन, है ना. ब्रिटिश ने आदत लगाई है हमें. इवन ऐसा कोई अकेला नहीं है ना, बहुत लंबे टाइम तक यही कहानी चली. हमारे मुगल एम्परर्स भी थे, जैसे अकबर शाह थे. अकबर शाह जिन्होंने टाइटल दिया था राजा, तो राजा राम मोहन रॉय, उनको भी भेजा था इंग्लैंड अपनी पेंशन के लिए, है ना. तो जब भी होता है ना कि भाई पेंशन कहाँ से है, तो हमारी हिस्ट्री में पेंशन के बहुत ऐसे स्टैलवॉर्ट रहे हैं. मुगल एम्परर ने डिमांड करी है, मराठास ने डिमांड करी, तो भाई हम भी करेंगे, है ना. जब हमारा इतिहास ही पेंशन के पीछे रहा है इतना लंबा, तो हम लोग कहाँ चले जाएं, एकदम से कहाँ गायब हो जाए. ठीक है. बट एनीवे, व्हेन वी टॉक अबाउट medieval, these are the broad topics, okay, which we were required to discuss. When we see exam orientation, exam में UPSC कहाँ से पूछता है? From early medieval period, UPSC asks at least 2 to 3 questions every year. Okay, they ask 2-3 questions from early medieval period. Then from Delhi Sultanate, again there are going to be 3 to 4 questions. 1 or 2 questions come from Bhakti plus Sufi movement. From here you can find 1 question. Okay, at least 1 question. Sometimes there are even 2 questions from here, Bhakti plus Sufi movement. They will ask architecture also. Architecture can come from anywhere, at least again 1 question. Literature, again they will ask at least 1 question. Overall, the number of questions which come in medieval are 14. 5 which are part of question number 5, 6, 7, 8, 3 questions in every, 3 subparts in every question, so all of them 14 questions. Then from the Mughals, we do find at least 1 to 2 questions every year. Akbar is the most important topic in the Mughals. Sometimes from the regional dynasties like Marathas, here also we find 1 question. Of late,
UPSC has also been asking questions from 18th century. 18th century means all these different kinds of states. Modern में इनके बारे में बात करेंगे. To start with the NCERTs of modern after the first week, 1 week after the prelims. ठीक है, उसके बाद prelims तो अभी आएगा इस संडे और 25th, तो हम अराउंड थर्ड के आसपास स्टार्ट करेंगे. आपको शेड्यूल पूरा दे देंगे कब से कब तक होगा. ठीक है, फॉर द पेपर 2. तो 18th सेंचुरी के कुछ 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. लाइक एक तो बहुत फेमस डिबेट है that do you think that 18th century is a dark age? तो ऐसे ऐसे 3-4 डिबेट हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर. वो मैं अभी लेना नहीं चाहता बिकॉज उसको लिए आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा बहुत अच्छे से. देन ओनली वी कैन डिस्कस दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो ब्रॉडली यही है, 14 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और ठीक से अगर पढ़ाई करी जाए लाइक 18th सेंचुरी से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आर कम. टोटल मिलाओगे तो वही 13-14 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे घूम फिर के. ठीक है, तो medieval remains a very important part for our exam. पेपर 1 का अगर हम बात करें, टोटल मार्क्स आर 250. ये तो सबको पता चल ही गया होगा अब तक. ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ठीक है, देखो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन. ये तो होता है मैप. दिस इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट. ठीक है, देन एवरी क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स, A, B and C. It goes for same, exactly same. This question is mandatory. You have to do it. This is section A. Section B is about medieval. Here question number 5. It has 5 subparts. 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे. इसके अंदर ही 50 मार्कर. Every question is 50 मार्कर. ठीक है, and this is again mandatory. Question number 1 and 5 are mandatory in this paper. It means 100 मार्क्स का पेपर में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी. This is mandatory. Question number 5 of medieval and question number 1 of ancient. Rest here also like 6, 7, 8 again same 3 choices, A, B and C. Total आपको 5 क्वेश्चन करने हैं. Total how many questions you have to do? 5. 2 are already done. Question number 1 and 5 they are mandatory. Rest you have to choose 3 questions. तो 3 क्वेश्चन जब हम चूज करते हैं, you can either do 2 questions from here and you can do 1 question from here, or the other way you can do 2 questions from here, you can do 1 question from. It is up to you. Majority of the toppers they are doing 2 questions from ancient. You have to remember less number of facts if you choose ancient, because in ancient it is more conceptual, in medieval it is more factual. Those of you जो कि बिल्कुल फोटोजेनिक मेमोरी वाले हो, आपके लिए कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा रहेगा? मिडिएवल. लेकिन जो हो कि भाई नहीं मुझे तो याद नहीं रहता, ऐसे भी तो होता मुझे याद नहीं रहता कुछ. एब्सेंट माइंडेड पीपल के लिए क्या है? एंशिएंट है ना, जो भूल जाते हैं फैक्ट. यहाँ पे कंसेप्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. एंशिएंट में एक्चुअली फैक्ट्स कम है, कंसेप्ट ज़्यादा है. वही मिडिएवल में क्या है? कंसेप्ट रिलेटेड. क्यों? इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है. मिडिएवल हिस्ट्री इज मोर और लेस क्लीन. We have a complete story, but in case of ancient it is not possible. बहुत ही कम थोड़े से एरियाज हैं जिनमें हमें बहुत अच्छे से फैक्ट्स मिलते. रेस्ट हमें लार्जली इंटरप्रिटेशंस के ऊपर ही फोकस करना. So that's why all of you need to remember this for the later part, because when you will be attempting means next year, so at that point of time this choice is going to come in front of you. Even in the papers which will set for all of you, हम इन्हीं चीज़ों की कोशिश करेंगे, इस तरीके आपको क्वेश्चन बना के देंगे. ठीक है, और यही सिस्टम रहेगा भाई, उसको आपको समझना है. एंड पेपर 1 में देखो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं. लाइक आई स्कोर्ड 168 मार्क्स आउट ऑफ 250. ठीक है, तो यहाँ तक तुम जा सकते हो. 170 तक भी एक बच्चे के आए हैं, मैंने देखा है. 171 तक भी आए हैं एक बार. तो मोटा मोटा आप समझ लो हाईएस्ट मार्क्स आज तक कितने आए पेपर 1 में? 170. 2021 की जो रैंक 1 थी, ठीक है, शी वाज माय स्टूडेंट, शी स्कोर्ड अराउंड 150. क्योंकि अभी आज तक थोड़े से मार्क्स यूपीएससी कम दे रहा है. इनफैक्ट हाँ, एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए. टुमारो वन टॉपर इज कमिंग फ्रॉम दिस ईयर. शी इज रैंक अराउंड 43. शी स्कोर्ड 303 मार्क्स इन हिस्ट्री. 303 नंबर, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को वो चाहिए ना कि हाँ 300 आ सकते हैं. हाँ जी आ सकते हैं मार्कशीट के साथ.
शी इज कमिंग टुमारो, वी गोइंग टू हैव अ सेशन एट 3 PM। ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटे का पढ़ाई वाला काम हो गया। कल से मौज मस्ती वाले क्वेश्चन, डिफिकल्ट लग रहा है बताओ ना क्या करना है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। तो टॉपर्स का सेशन इसलिए रखा जाता है बिकॉज देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब आप चूज करते हो तो एक हमें सामने वो इंसान चाहिए कि जो हाँ देख के लगे कि हाँ उम्मीद जगा है। जितना रिसेंट हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। जैसे लाइक इन माय केस, आई गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन 2018। नाउ आई हैव बीन हैविंग लॉट्स ऑफ टॉपर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 21 की जो रैंक वन थी, शी वाज माय स्टूडेंट, सिमिलरली शी इज आल्सो, राइट। so what we need to remember is this, that these people can give you some internal advice कि भाई मैंने ये चीज गलतियां करी, आप ये मत करना। और जो लेटेस्ट टॉपर होते हैं वो थोड़ा सा ग्लैमर ज्यादा, क्योंकि हम लोग अब पुराने हो गए, है ना, तो ग्लैमर कम हो गया है, टीचर ज्यादा बन गए। ये लोग अभी थोड़े से नए नए निकले, तो आप लोगों की एज के आसपास ज्यादा रेजोनेशन, तो अपने स्टूपिड क्वेश्चन से पूछ सकते हो। करेंगे तो अपने मन की, देखो लास्ट में तो मुझे पता है कैसे लेके आना है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन एटलीस्ट सुनना जरूरी है, बिकॉज एवरीबडी स्टोरी इज इम्पोर्टेंट। प्रोबेबली हो सकता है कोई दो चार एडवाइस आपको हो कि भाई ये चीज और कर लेना, ये मत करना। मेरी नहीं मानोगे तो एटलीस्ट उनकी तो मानो। मेरी स्टोरी तो मिल जाएगी तुम्हें, क्लासेस के अंदर स्टोरीज ही चलेंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। पर देखो, एग्जाम ऐसा ही है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, आई स्कोर अराउंड 220 मार्क्स, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट तक इम्प्रूव किया, लेकिन उतना ऊंचा नहीं आ पाया। थर्ड अटेम्प्ट तक आई गॉट अराउंड 265, लेकिन मेरे बाकी सब्जेक्ट मार्क्स काफी अच्छे थे, तो आई गॉट सेलेक्टेड, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ गए थे। फिफ्थ अटेम्प्ट तक मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी यार क्या पढ़ना है क्या नहीं। सोर्सेज ही नहीं थे ठीक से पढ़ने के लिए, नोट्स नहीं बने हुए थे, मैप नहीं, का वाला पार्ट नहीं आता था अच्छे से। जब ये सारी चीजें कर ली तो ऑटोमेटिकली जो मार्क्स हैं वो 324 आ गए। पेपर वन में 168, पेपर टू में 156 के आसपास, टोटल मिला के 324 बन गया। तो व्हाई डिड दैट केम, वो मार्क्स फिफ्थ अटेम्प्ट में क्यों आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं है, इसका एक रीजन है सबसे, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता था, टीचर से पूछता था रोज और कोई बुक बता दो, ठीक है ना। तो एक बुक खत्म होती थी, उसको कंसोलिडेट करे बिना दूसरे की तरफ चल देता, ठीक है। फिर एक और रीजन भी होता है, देखो सिर्फ ये नहीं कि तुम गलती करोगे, कुछ चीजें अनजाने में भी होंगी। जैसे कि आपने मान लीजिए कुछ टॉपिक छोड़ दिए, सुन लिया किसी से कि ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी में यार देखो एक एक साइकिल चलती है, कुछ साल कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट, कुछ साल कुछ और टॉपिक इम्पोर्टेंट, वैसे टॉपिक आ गई पेपर में सामने। तो एक आधा अटेम्प्ट तो किसी भी बच्चे का किसी भी ऑप्शन में कभी भी खराब हो सकता है। जैसे मेरे साथ 14 में क्या हुआ, 13 में ही पेपर का चेंज हुआ था हमारा, पता है सबको, 2013 में चेंज हुआ था। पहली बार एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने शुरू हुए 12 तक के क्वेश्चन। जब मैं आपको दिखाऊंगा ना पीवाईक्यू में, आप वगैरह सर कैसे आईएएस ऑफिसर बने थे, है ना, हमें भी ऐसा ही पेपर दे, तो चीटिंग है हम लोगों के साथ में। तो 13-14 से क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट आने लगे, तो हम लोग जो उस टाइम बिल्कुल शुरू हुए थे, हमें एडजस्ट करने में टाइम। अभी क्या है ना कि भाई इजिली जीएस 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है, ऑप्शनल में कौन से बुक है, सब कुछ स्टेबलाइज्ड है। हमारे टाइम क्या था, एथिक्स नया पेपर है ना, क्या पढ़ना, ना टीचर है कोई, टीचर भी तो बन रहा था ना अभी। जब सब्जेक्ट है किसी ने पढ़ना चालू किया, आंसर राइटिंग क्या होगी पता नहीं, आंसर राइटिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा एकदम से इंप्रूव हो गए। तो इनिशियल ईयर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हम लोगों के लिए, जितने भी हम लोग जारी कर रहे थे, इसलिए उस टाइम स्ट्रगल ज्यादा था। लेकिन अब उतनी स्ट्रगल, अब देखो क्या है, कंपटीशन बढ़ गया। उस टाइम स्ट्रगल ये थी कि हमारे पास कंटेंट नहीं, हमारे पास टीचर नहीं, हमारे पास कुछ। अब क्या है, टीचर बहुत ज्यादा है ना, कंटेंट बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेटजीज की वीडियोस बन गए हैं। उस टाइम यूट्यूब भी नहीं था ना, 2013-14 में यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं था, स्टडी का तो बिल्कुल नहीं, इधर उधर की म्यूजिक वीडियो देख सकते थे, है ना। लेकिन पढ़ाई की वीडियोस नहीं हुआ करती, इनफैक्ट टीचिंग रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो 2016-17 के बाद शुरू हुई। उसके बाद ही मतलब मोटा मोटा यूट्यूब जो है वो कंटेंट एजुकेशन का स्टार्ट हुआ था, यूपीएससी का। तो आज क्या जरूरत से ज्यादा वीडियोस आ गए, ठीक है। तो किसी भी टॉपर के से आप पूछोगे ना, तो वो घूम फिर के यही बोलेंगे कि मैं आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, देख लेना, मोटी मोटी यही स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो उसके पीवाईक्यू क्या करना है, सॉल्व करना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, फ्लूइड रहना है,
कि एक क्लास में कंसेप्ट समझा, धर्मशास्त्र का अगली कंसेप्ट दूसरी बार धर्मशास्त्र बोला था, नहीं सर हमको है, हमसे नहीं हो पाया। ये नहीं, कनेक्ट करना सीखना है कंसेप्ट। अगर वर्ण सिस्टम के बारे में है तो उसके बारे में पूरा ठीक से समझना। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉवरेंटी थियोरी ऑफ द मुगल, तो उसके बारे में समझना। तो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, उनको अच्छे से करोगे तो पेपर वन बड़ी आसानी से निकल जाए। और पेपर वन की सबसे अच्छी चीज क्या है, आपके प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एंशिएंट प्लस मिडिएवल। मेंस का जीएस पेपर वन थर्ड पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम हिस्ट्री। और सारे के सारे यूपीएससी में आपके ऑप्शनल के पीवाईक्यू आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो एक प्रोग्राम है जिसको हम सृजन प्रोग्राम बोलते हैं, उसको हिस्ट्री वाला पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा जीएस वाले बच्चों को। तो उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जो अभी कंटेंट बना रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शन के पीवाईक्यू पकड़ो, थीम्स निकालो, उसको अच्छे से प्रोसेस करके बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनकी आंसर राइटिंग क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। जीएस का बच्चा सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट से डरता है, हिस्ट्री। उसको लगता है हिस्ट्री तो कभी हो ही नहीं सकती, और वो सेंस उनको ड्रामना लगता है, सब बच्चों को बोलते रहते ऑप्शन मत ले लेना, सबको बोलते हुए घूमते हैं कि मत लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई टॉप 50 टॉप 10 रैंक 1 अगर हिस्ट्री ऑप्शन से आ रही है, इट मीन ऑप्शन में खराबी नहीं, पढ़ने वाले में या पढ़ाने वाले में खराबी। ठीक है ना, एक जनरल रूमर बन जाता है ना। देखो अब आप लोगों को मान लीजिए आप इतनी क्लासेस में सब बैठे हो, आपको हिस्ट्री पता है, आपको समझ में आ रहा है, आपको मन भी कर रहा है लेने का, लेकिन फिर एक दोस्त आता है, दोस्त कहीं गलती मत कर देना ये मत कर देना, वो मत कर देना। जरूरत से ज्यादा आइडियाज के अंदर जाओगे, कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं, कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं। दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। और डिसीजन देखो ऐसे ही लिया जाता है। मैंने कैसा डिसीजन लिया था हिस्ट्री ऑप्शन पे, मैंने एक बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ ली, मुझे अच्छी लगी, मुझे उसमें एनेक्डोट्स अच्छे लगे कि यार अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। फिर मैंने एक बार सिलेबस भी ओपन किया, मैंने कहा ठीक है, मतलब कभी ना किसी टाइम पे क्लास में सुने तो थे, मुगल्स भी थे, मराठास भी सुना था, मोटा मोटा मेरे को उसकी जानकारी थी। किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ोगे, मिनिमम 1 साल अच्छी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के आप किसी भी ऑप्शन में पास हो सकते हो, कोई हाँ करने वाला है तो बता दो। बिना अच्छे नोट्स के पास हो सकते हो, बिना पीवाई की सॉल्व करे पास हो सकते हो। तो भाई अगर आपको पास होना है तो घूम फिर के आपको एक ऑप्शन को चूज करना ही पड़ेगा, और ये सब प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हिस्ट्री इज हैविंग दैट मल्टी फेसेटेडनेस। जैसे मेरे हर बार प्रीलिम्स निकलने का सबसे बड़ा कारण क्योंकि मुझे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते थे। बाकी जनता अभी वही बोल रही बहुत मुश्किल है मत करना। तब तक हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से और आंसर राइटिंग सीख ली। आंसर राइटिंग एक बार अच्छे से आ जाएगी ना, तो सारी चीजें ऑप्शन से फिक्स हो जाती। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, दे डोंट लर्न हाउ टू राइट। आप सब लोग भी देख लीजिए, होम पे के अगर आप जीएस भी पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स में उतनी दिक्कत नहीं आती कंसेप्चुअल लेवल पे, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेंस में आंसर लिखने। प्रीलिम्स में ये मान सकता हूँ कि भाई देखो जब 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो जजमेंट एरर शुरू होती है कि हाँ ये सही होगा कि यही सही होगा। उस पर काबू पाने चलो फिर भी आसान है, सबसे मुश्किल चीज क्या है, आंसर राइटिंग। और मेंस पे सिलेक्शन, प्रीलिम्स के मार्क्स थोड़ा ना जुड़ते हैं, कहीं पर भी जुड़ते हैं क्या प्रीलिम्स के मार्क्स, नहीं जुड़ते। तो सिर्फ एक गेटवे पास है आप सब लोगों के लिए, और मेंस में इसके मार्क्स में से जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के साथ। एक बार आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्लासेस जैसे मान लो 3-4 क्लास थी, अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। इनफैक्ट ऑल ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट्स दे कनेक्ट विद मी इन एवरी मींस कि हाँ सर हमारा प्रीलिम्स निकला है, अब मेंस कैसे निकालना है। फिर इंटरव्यू के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपका सिर्फ मेंस में नहीं पूछा जाता, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। देयर वाज अ गर्ल दिस टाइम अराउंड, थोड़ा सा अनलकी रही, मार्जिन पे रह गई, बट शी स्कोर्ड डिसेंटली अराउंड 270 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शन। शी इज हैविंग इन इंटरव्यू शी इज हैविंग 190 प्लस। मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री, और मैंने ट्रेन किया था क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए भी 5 साल लेक्चर देता हूँ। वहां पे तो समझाना पड़ा, कुछ भी बोल के आ गए तुम लोग, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने गए तो कुछ भी बोल के आ गए। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। ये आंसर्स नहीं दे सकते, या फिर वाला भी राग नहीं गा सकते उस टाइम। तो आई हैव टू ट्रेन फॉर ऑप्शन। ये बात करना भी सीखना पड़ेगा ना। अब औरंगजेब को मान लो हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया के अंदर, आपको 4 लाइन ऐसी तो बोलने लगी जो लगे कि हाँ भाई इट इज नीडर टुवर्ड द, कि बहुत एक्सट्रीम हो गए या बहुत लिबरल हो गए। वो चीजें सिखानी पड़ती है हिस्ट्री के अंदर। इंडस वैली के बारे में 4 लाइनें पूछ ली, बताना पड़ता, समझाना पड़ता। पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, कितने वॉर्स हुए हैं, और ना खुश होकर बोल दिया इतने हो गए हमारे वॉर, आगे की डिटेल
कैसे रिप्रेजेंट करनी वो सिखानी, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान दैट टू साइड्स ऑफ द सेम। इफ यू सी 1947 बाद में वो सिक्का खोटा हो गया, ठीक है, वो बात अलग है ना। 1947 हम सेम थे, there was no difference, but then the state came and that state has completely devastated the communities of a people who were thinking that they are one nation now। पूछा था ये क्वेश्चन कि भाई टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हो क्या? फिर अब वो नहीं कि सब दिल की बात बता दो दिल दोस्त कौन कहाँ क्या क्या करते थे वो सब नहीं बताना, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी। इज देयर टू नेशन थ्योरी? तो सबसे बड़ा एग्जांपल खुद पाकिस्तान है। इफ टू नेशन थ्योरी वुड हैव बीन करेक्ट, बांग्लादेश कभी बनाना नहीं चाहिए। अगर टू नेशन थ्योरी करेक्ट होती तो बांग्लादेश कभी बनना चाहिए था क्या? नहीं बनना चाहिए। ऐसे आंसर करने पड़ते। Sir, two nation theory is not correct. This would have been correct if we just take it on the face value. Then they should not have been the creation of Bangladesh. Because Bangladesh and the West Pakistan, East and the West Pakistan, they were having same. So if the state which was built on the basis of two nation theory is not able to sustain, is this theory sustainable? Not sustainable. वहीं आप कहीं बीच में कोई रास्ता लेके बैठ के इधर उधर का आधे घंटे तक ड्रैग करेंगे आपके पीछे। तो इसलिए ऑप्शनल के लिए जब हम इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं तो अलग से हम 100-150 कोशिश किस चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। तो ऑप्शनल का पेपर वन मैंने पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया आपको एक लेवल तक, बट स्टिल इट्स एन इंट्रोडक्शन। डोंट कंसिडर दिस इज द फाइनल, बिकॉज टीचिंग जब हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्लास के साथ में अराउंड 10th of June, द होल आइडिया इज गोइंग टू बी टू पुट ऑल द पर्सपेक्टिव्स इन योर हेड। अच्छे से आपको पर्सपेक्टिव सिखाए जाए, ठीक है। यू शुड लर्न द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, because history is nothing but history is of all the subjects। सारे सब्जेक्ट्स को मिला दो क्या बन जाता है वो हिस्ट्री बन जाती है। तो आपको थोड़ा सा जनरल स्टडीज में भी अच्छे होने की कोशिश करना। पॉलिटी के कुछ टर्म्स बोलूँ तो समझ लेना एक बार में, है ना। ऐसे इकोनॉमी के टर्म बोलूंगा, मान लो वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं उस टाइम पे बोल दिया पॉलिसी ऑफ पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग होता है जब ज्यादा पैसा छाप देते हो। इन्फ्लेशनरी काइंड ऑफ है इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। सोसाइटी के भी कीवर्ड बहुत सारे आते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, संस्कृताइजेशन हो गया, ऑल दोस होते हैं। तो हिस्ट्री में जितनी अच्छी आपके बाकी सब्जेक्ट है जीएस के, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ऑप्शन बन जाता है। क्यों? तो आप ज्यादा अच्छे कीवर्ड को यूटिलाइज करें। तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ो और हिस्ट्री सिंस इफ यू टेकिंग एज एन ऑप्शनल तो और अच्छे से आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज यहाँ पे एंड करें, ठीक है। कल प्रॉपर का सेशन है, आना जरूर। अगर और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका असाइनमेंट ना हो तो आना जरूर, एक बार देखो मिलो, उससे क्या होता है ना मोटिवेशन आती है। तो मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन सेशन में तो नहीं जाता, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अपनी स्टोरी अच्छी बनेगी, अपने ऊपर ध्यान देते, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ ठीक है, धीरे कुछ लोग सुन लोगे तो कुछ अच्छी एडवाइस दे देंगे वो लोग, ठीक है ना। तो प्लीज देखिएगा, एंड सिंस इट इज कंसर्निंग योर ओन सब्जेक्ट्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। 1 second, ठीक है।